वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे पाश्चात देशतारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता की हरे कृष्णा। सो पुनः भगवद गीता का Hare Krishna. So again, we have recited till the 6th chapter again for Bhagavad Gita. On the auspicious occasion of Gita Jayanti month, we all are trying to circumambulate Srimad Bhagavad Gita, and on this occasion, reciting these verses, we or the devotees, by reciting them, gets an inspiration to understand it. Although it is a short scripture, but it is very secretive as well. Krishna, in so many verses, have told Arjuna that it is a secretive, confidential knowledge. He says, Raju Vidya Raju Guhyam. He has used this word Guhyam Rahasya, that this is a secret transcendental knowledge. Krishna has admitted. So, to understand this Bhagavad Gita, we should have a appropriate spiritual master and proper time. So there are 700 verses in Srimad Bhagavad Gita, and if someone says what are the main or major verses of Bhagavad Gita, although every verse is equally important from Bhagavad Gita, but Srila Prabhupada ji, out of those 700 verses, have selected 101 verses which he considered as major, and we all should by heart them, we should memorize them. Although we should memorize all the 700 verses, but we have the mind of Kali Yuga. We are in the age of Kali Yuga. The memory is very less. So if we are unable to understand or memorize these 700 verses, then at least we should memorize at least 100 verses from Bhagavad Gita. So some of you might say that even 100 are very tough to attain. Is there any way out? So we should memorize 700. If not, then at least 100. But although I am trying to spoil you all, if you are unable to memorize 100, but at least you should memorize minimum 7 verses from Srimad Bhagavad Gita. Let me add one more time. Let me repeat myself. All the verses of Bhagavad Gita are important. But if someone forces me that of these 700, you need to select only 7, then the first and foremost verse I will say is the last 2 days are remaining of the Bhagavad Gita. So we will discuss these 7 major verses, and there will be a homework
that at least you should memorize at least these 7 verses. So the first verse is the 22nd verse of chapter 9 of Bhagavad Gita. तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक में से So of 700 verses of Bhagavad Gita, we are to select only 7. Then the first and foremost will be 9.22. This the verse in front of your screen. Lord Shri Krishna tells in this verse that, O Arjuna, Jana means these humans or humankind. So those who remember me and are fully surrendered to me, Ananya means only one. So when one surrenders himself completely on the Lord only, Ananya means no one else, only one. According to Mirabai, Ananya means Mero to Giridhar Gopal. But Dusra na koi, that means this Dusra na koi is Ananyatha or oneness. So we have reached the stage of Mere to Giridhar Gopal, or mine is Giridhar Gopal, but the second stage is, or addition to that, Dusro na koi, that means no one else apart from Giridhar Gopal. So if I have to speak in the language of Chaitanya Mahaprabhu, then श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत इदम, ये महाप्रभु का मत है। so it is the opinion of Chaitanya Mahaprabhu, and I respect that. But the last word is na paraha, no one else. I don't have that much respect for anyone else. That is the ananyata or oneness. Sri Rup Goswami in says Anya Bhilashita Shunyam. That is, I have that no expectation, and there is no one except Krishna, Krishna, and Krishna. So a person who completely surrenders only to me, Tesham Nitya Abhiyuktanam, that means that devotee, Yug and Shem Vyamaham. So we can have a 3 hours discussion on this verse. So I have to give you homework of these 7 verses. So we are going for physical katha, so there will be a gap. So you all should memorize at least these 7 verses. So it is very, very important to be surrendered to only one, that is Anyanit and Ashrit. We see in the material world as well that if a child is surrendered to their parents, he is not worried at all. Small kids, they are so carefree. Sometimes we see and feel that even we should become
We should be खाना नहीं kids. है फिर भी माता Even, खिलाती हैं, even if he's उनको not hungry, नए नए mother वस्त्र पहनाती makes हैं, them eat. उस They बच्चे don't को want to अपने जीवन की wear, कोई then still चिंता नहीं mother है। gives the माँ बाप clothes to उनका wear. सारा ध्यान They're रखते not हैं worried at all. The parents क्यों? take care of everything for क्योंकि वो them. बालक Why? अपने पेरेंट्स Because को that child आश्रित है, is completely surrendered अनन्यस to its चिंतयन्तो parents. माम, तो वे सारी चिंता से मुक्त हो जाता है। So he is relieved of और all अपने the माता stresses पिता and के anxieties. आश्रय से वो जितना दूर जाता है, And as he उतनी moves उसकी चिंता away बढ़ने लगती from है। the जब वो बच्चा shelter बड़ा होता of है, the parents, फिर when माँ he बाप की नहीं starts सुनता, to grow up, फिर he माँ बाप doesn't के listen आश्रय to में the नहीं रहता, parents. और He जितना is माँ not बाप under के the आश्रय shelter of से the दूर parents. होता है, And the more उतना he moves चिंता, away from the shelter of the शोक, parents, प्रॉब्लम the से more घेरने लगता है। he starts surrounded by और फिर एक दिन problems, टोटल distress, माता पिता anxieties, के etc. आश्रय से दूर हो जाता है, And और one day फिर he टोटल completely leaves the चिंता shelter of में, the दुखों parents में फंस जाता है। and he becomes completely entangled in problems, लेकिन distresses, माता पिता के and आश्रय में sorrows. रहकर But under the shelter of the वो parents, चिंता से मुक्त होता है। और he is दूसरा relieved क्या of होता the है? stress. And the second thing is कृष्ण कहते हैं योग वहामी that अहम, happens, जो मेरे आश्रय में रहता है उसका मैं योग वहन करता हूं और क्षेम वहन करता हूं। योग का so अर्थ होता है कि उस yoga here व्यक्ति को जो implies चाहिए, whatever he जो उसे जिस वस्तु desires की or he, आवश्यकता है, or he needs, वो वस्तु मैं उसे प्रदान करता हूं। I provide that thing to him. अब देखिए कृष्ण जो So है now, एक see, पेरेंट्स की तरह Krishna, अपने like the बच्चे को जो parent, चाहिए वो प्रदान करते हैं। takes एक care or एक gives पॉइंट हमें समझना है। everything that the child needs. So, one thing बच्चा we need जो to understand मांगता here, है whatever उसको the child पेरेंट्स सब कुछ नहीं desires, दे देते। parents don't give everything that they desire. बच्चा जो मांगता है वो सब कुछ So, नहीं मिलता, लेकिन whatever हाँ, is बच्चे asked के by लिए the जो अच्छा child होता is है not वो given सब by मिलता the है। parents, but फिर whatever कृष्ण is कहा good for the हम child, आप कृष्ण को आश्रित हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम if we are जो कुछ मांगेंगे वो सब shall भगवान देंगे, नहीं। surrender to Krishna doesn't mean हमारे or लिए जो implies that कल्याणकारी he will होगा give everything to us, वो but भगवान whatever हमें is देंगे। योग beneficial का for अर्थ us, ये है। then the Lord will give that to योग us. वहाम्य हम माने That is the meaning मेरे of भक्त के लिए, yog मेरे आश्रित के लिए prayamayam. जो That means the कल्याणकारी है, devotee उनके who is जीवन का, surrendered to उनकी me, आत्मा का जो and हित whatever है is भगवान beneficial उसे for देंगे। their soul, that ये will be योग का provided अर्थ by है। the Lord. That is the ये meaning of केवल yog कृष्ण कर here, सकते हैं और कोई and नहीं। that आप only अपने Krishna पेरेंट्स is को capable to छोड़कर do. अन्य If किसी you leave व्यक्ति your से भी कुछ parents मांगोगे and if you तो ask आपके someone लिए अच्छा है else, बुरा है वो आदमी नहीं सोचेगा, आपको they दे will देगा। not think whether it is good for जैसे you or not, and he will give it to you. भारत For में example, 10-15 साल का in कोई Bharat, लड़का हो, there is a वो adolescent कोई boy. पान सिगरेट तंबाकू की दुकान में जाए He goes और to कहे shop जरा of सिगरेट पीने का मन हुआ है तो cigarette 10 or रुपए liquor, एक etc., सिगरेट and पीता है। tells that अब जो जो दुकान I वाला want है to smoke a cigarette. वो तो So जादू कर रहा है ना, उसका तो he कमाल gives the किया है, money and he तो वो 10 रुपए says that लेगा और give me the सिगरेट cigarette. पिएगा। So the shopkeeper will just take the money and give the cigarette to लेकिन the वो boy. लड़का अपने घर But पर है और पिताजी बाहर जा रहे हैं, तो if बोले that पिताजी कहाँ जा रहे हो, बोले नीचे, boy बोले is पिताजी at नीचे home क्यों जा and रहे हो, his बोले father is भैया going, मेरे लिए and एक if he सिगरेट gives लेके 10 आओ, rupees मैं to the सिगरेट father and पीने says का that मन you're है। going out, so please bring a cigarette for me as I want, have a desire to smoke. वो पिताजी So पैसे imagine what will निकालेंगे happen. और बच्चे को एक जोर से The थप्पड़ भी father will मारेगा, take the money and then he will सिगरेट पीने slap लगेगा। as him as well. You want to smoke a अब इस cigarette? सिचुएशन में आप मुझे बताइए, In this situation, जो you tell दुकान me, वाले ने सिगरेट दी, ये अच्छा है the कि पिताजी ने shopkeeper who पैसे gave भी the दिए, cigarette is good, or सिगरेट भी नहीं the दी और थप्पड़ भी मारा है, वो father who अच्छा है? took the money and the समझ cigarette रहे and हैं जवाब क्या slapped है? as well? Is he? दुकान वाले ने दिया वो अच्छा है कि उनके पेरेंट्स ने उससे ले भी लिया, थप्पड़ भी मारा और कुछ नहीं दिया, ये अच्छा है? ध्यान से। So just reply carefully. तो फिर हम Which क्यों रो one रहे is हैं, गा better? रहे हैं, So why are we क्यों भगवान crying? से भीख मांग रहे हैं? Why we are begging to the Lord? भगवान हमारा हित चाहते हैं। Lord कभी thinks कभी of हम लोग our भगवान से benefit कुछ and welfare. मांगते हैं, अपनी Sometimes we सुविधा ask the कामना Lord, करते हैं, we लेकिन desire भगवान something from हमको the नहीं Lord, देते हैं। इसका yet He कारण ये doesn't है gives it. कि The उसे reason हमारा behind हित that नहीं is है,
that it is not beneficial कभी for कभी हम us. उससे ले भी लेते हैं, And sometimes when धन He takes प्रतिष्ठा it धन away from संपत्ति us, घर बार, He takes भगवान away उससे the कभी wealth, छीन लेते हैं. opulence, fame, उसके पीछे etc. भी He रहस्य है. snatches it from us. भगवान There is a जानते हैं deep secret वो behind हमारे it लिए ठीक नहीं because है. the Lord is aware. सो बहुत सुंदर ये भगवत गीता का श्लोक है So, कि this is a जो very beautiful verse भगवान from में Srimad आश्रित Bhagavad हो Gita, जाता है, उसका that a योग person भी who वहन करते is हैं. surrendered to me, तो I will योग का take अर्थ care है of वो his needs, उनके लिए जो भी and whatever कल्याणकारी is वस्तु है beneficial or भगवान useful for प्रदान him, I करते will हैं. provide him the दूसरी same. बात ये क्या है, The second एक point बच्चे here को is the अपने माँ kids बाप से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है. need not ask क्या their बच्चा parents रोते for रोते anything. कभी माता को कहेगा माता Does जी आज रोटी खिलाएगी the कि मुझे आज child दूध पिलाएगी? ask the mother अरे that will बात you आप नहीं feed भी me मांगेगा today? तो वो Even पिलाएगी. if you don't ask, still ये she will मांगने की provide जरूरत it. नहीं है. You need not to ठीक उसी ask. प्रकार यदि हम और Similarly, आप कृष्ण को if आश्रित हो we are जाते हैं surrendered तो to the कृष्ण Lord, से मांगने की जरूरत then नहीं we है. need not need हमारे to लिए जो ask अच्छा होगा वो from बिना Him मांगे दे for देंगे. anything. मांगना ये तो पाश्चात्य संस्कृति है. To ये तो ask यहाँ अमेरिका जैसे is देशों में the संडे को जाते Western हैं, culture. On Sunday, they प्रेयर go, करते हैं, they कहते pray हैं to the रोटी Lord ब्रेड दीजिएगा, बटर that please give दीजिएगा. us bread, ये butter. क्या भगवान से कहने की जरूरत है Is this कि something ब्रेड that we should बटर ask the दीजिएगा? Lord? अरे वो हमारे माता पिता है, They are our पेरेंट्स है. parents. आप नहीं भी मांगोगे वो Even देंगे. if we don't ask, still He will give it हमें to us. करना है तो केवल एक What ही, are we supposed to do? We अनन्याश्चिंत are supposed to यन्तो only do माम one thing, ये that is जना पर्युपासते. Anyanishchintanayanto Mam. हमें अनन्य भाव से कृष्ण We को आश्रित should होना है be surrendered और उनकी completely उपासना and करनी only है, to the Lord and भजन perform His करना है, devotional उनसे service. प्रेम करना है. We should love Him. हमारे जीवन में जो भी In आवश्यकता our है life, whatever we require, He will provide और us. हाँ, जिस वस्तु से हमारा नुकसान होने वाला है हम लाख चाहे भगवान हमको नहीं देंगे, क्योंकि So, वो हमारा हित देखते even हैं. if it's if it's not beneficial, then even if we ask again and again, the Lord will not ये provide भी us वहन that. करते हैं और क्षेमम, क्षेमम And माने हमारा similarly, रक्षण करते हैं, He takes हमारा care of Shemam. हमारी That means वस्तुओं का He रक्षण करते protects हैं us and our things और हमारी and उसी people. वस्तु का रक्षण And करते हैं what जिससे He हमारा protects कल्याण होने only वाला हो. those things that are beneficial for us क्या परीक्षित महाराज or for our path of कृष्ण devotional के service. भगत नहीं थे? Was not Prahlad लेकिन the कृष्ण devotee ने of the परीक्षित Lord? महाराज के राज्य का रक्षण नहीं किया, सब कुछ राजपाट So, छोड़कर जाना पड़ा. Parikshit was totally लेकिन क्यों surrendered to किया? the Lord, yet he had to सुखदेव का leave the आश्रय और kingdom, कथा का श्रवण but it was for his सब कुल benefit. He मिलाकर got an association of Shukdev भगवान कभी Goswami and कभी heard हमसे Srimad कुछ भी छीन Bhagavatam. लेते हैं So उसका क्या sometimes when होगा? the Lord हित snatches होगा. something from us, that also is सो for गीता our का benefit. 9वें अध्याय का So 22वें this वचन is का the श्लोक बड़ा 9th महत्वपूर्ण है. chapter's 22 verse, which is 700 very में से यदि important. 7 श्लोक छांटने हो तो ये नंबर 1 पर रहेगा. अनन्याश्चिंतयन्तो So माम this is the topmost पर्युपासते verse to be memorized. सर्वभूत्यभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्. ओके, दूसरा श्लोक So the second verse 7, तो दूसरा श्लोक ये होगा, is this one. कर्मण में वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् माते संगोस्त्वकर्मणि. भगवद गीता के दूसरे अध्याय का So Bhagavad Gita, 47 नंबर का श्लोक है. yeah. कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, अर्जुन कर्मणि एव अधिकारस्ते. So here in this verse, अधिकार Lord Krishna tells Arjuna करने में है. that your नोट only करना, ये श्लोक तोते की तरह choice हम is रोज रट to लेते हैं work. और बीआर चोपड़ा We की कृपा से
memorize it like a parrot. We all remember it by the mercy of B.R. Chopra ji. But we need to understand what do we translate it to, that we should perform our duty and we should not expect any fruits. What does it imply? You should work, but you should not expect a wage from the employer. Is it possible? Even before accepting the job, we ask what will be the remuneration that we will get. So even if when we start a business, we see what will be our profit. So we just memorize this verse. We need to imbibe it as well. But the greatest question is that if we are not, we don't, if we don't have the desire to have the fruit, then what will be the motivation to work? Whatever work we perform, the motivation is the fruit behind it. So without expectation of a fruit, what will be the motivation to work? Just let me explain. So it is just a matter to speak. Who lives by this principle has any, who imbibes it in their own life. But let me give you a clue or a key so that you can imbibe this verse in your life. And it's not tough as well. So, to work and not expect the fruit is not tough, but we need to understand a little. Although we might speak it for the sake of saying, but is it possible that we work and we don't expect any fruit? Just tell me one person who works and he still doesn't wants the fruit. Even for the when we are listening to Bhagavatam, we are thinking that we will be benefited, at least we are enjoying at this point of time. So if we don't have any expectation, then we won't be possible, it won't be possible for us to put our soul into our work. But Krishna has told, this is the big greatest principle of Bhagavad Gita, that you have the right or choice to perform the work or karma, but अधिकार नहीं है। don't have any control. कर्म के फल में तुम कर्म के फल के लिए कोई काम मत करो। So you should not work for the sake of just एक छोटी सी बात, fruit. So let me give you a pass. If you understand this, you this verse will blossom. What does the sages and spiritual master do? They give the key, then we can open the door and windows on our own. So we are supposed to work and we are not supposed to expect the results. That implies कि हमें कर्म करना है, we should work हमारा अधिकार कर्म के and ऊपर है, it is our choice फल के ऊपर on जिसने what work we दिया want है, to do. But who is the controller of the result? That is the Lord. कृष्ण कहते हैं कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, फल Krishna says that मेरा अधिकार है। the work तो हमें can मोटिवेशन कैसे मिलेगा is कि मेरा अधिकार कर्म करने can be chosen by you, but not फल पर the fruit. अधिकार कृष्ण का है। The, चलो कोई बात नहीं, the fruit belongs to the Lord. So Krishna is our beloved, कृष्ण को beloved. फल He मिलेगा, is our master. So if he जिस gets the fruit, we are अपने घर पर भोजन happy with that पकाती or है, satisfied with that. कितना When a कष्ट होता mother है उस चूल्हे के cooks पास food खड़े रहना, उसकी for the तपन kids, आग को it's सहन करना, she तमाम tolerates the मेहनत कढ़ाई heat करना कष्ट है। and it's distressful कभी to एक prepare माँ the meal. को And सुबह sometimes भोजन a नहीं mother, करना होता, although निर्जला she doesn't उपवास want करती है, to eat as she is fasting or something, but प्यार से still बड़ी she आसक्ति से वो भोजन prepares बनाती है। क्यों? the food with so much मेरा attachment. बेटा इसे Why? खाएगा, Because her मेरा son बेटा is इसे going to eat खाएगा। it. तो वो फल किसका है? So उसके बेटे का। whose fruit कर्म it खुद is कर the रही है, fruit वो of कर्म में आसक्त भी है, the son. कर्म Although करने she के is लिए working तैयार भी है, hard,
दे रही हैं अपने बेटे The को, fruit to whom? To her son. Because she has love towards him, that is why there is a motivation. Similarly, we should work in our life, but we should offer the fruits to the Lord. Whether it is a good result or a bad result, the fruit belongs to you. My only choice is to work. And because we have offered the fruit to you, it is yours, and because it belongs to you, therefore I will try my level best to fulfill this work properly so that you can get a great fruit out of it. और क्योंकि कृष्ण इसके फल के भोक्ता है, इसलिए हमें कर्म में आसक्त होना है, कर्म में कार्य करना है, कर्म का मोटिवेशन। Fruit belongs to the Lord. Therefore, we should work hard so that He can be benefited. So, for example, if you have a friend and he is in some distress, and you get to know and you help him, example, by your mind, body, or wealth, whatever manner he required, and when you had some trouble, you should not keep a hope that that friend will help me at that time. कर्म पर आपका अधिकार है, आपके जीवन में आपका मित्र You मदद have the control on your work, but whether your friend will help or not, that is not important, and we should not be concerned about the same. In Gujaratis, there was a time when there were marriages or functions, etc. So they used to write the so they used to give money, and the give person who used to receive, they used to write, and the giver also used to write. So when there is a marriage, they'll take out the list of what we have got, and if there is some money less than what we have got, then there is a discord between them. अरे यार कर्म कर दिया, अब वो हमें भूल जाना है, वो फल। We have already done our deed, so after that we need to forget, because Krishna will take care. So this is applicable everywhere. Sometimes I'm unable to understand that in material world it is still okay, but in spiritual world as well, a disciple works hard for the spiritual master and the Lord. There also he thinks that he expects fruit or result. I have done so much Bhagavad Gita. I've distributed so many Bhagavad Gita. I didn't got a certificate. I've worked so hard. I have not got the required fame. Our work is to perform our action. The result is in the hands of the Lord. It totally belongs to the Lord. And because Krishna has said this verse, therefore we are satisfied. कर रहे हैं हम, कर्म किए जा रहे हैं, फल आप देखिए। Just लेकिन एक बात याद रहे, taking care of the work, and the result is in your hands. But remember that the result is beneficial, or the result that only that result that belongs to Krishna is the one that he has spoken about. Like if you drink liquor and you say that the result will be for Krishna, it is not applicable. So according to the Vedas and Vedic injunctions, whatever work Krishna has prescribed, those deeds are in our control, but the fruits belong to the Lord. So we should think कृष्ण के लिए हम कर्म कर रहे हैं, that we are working for the Lord. And if we do that, then it will become
unalloyed devotional service of the Lord. किसी दरिद्र किसी दुखी आदमी की सेवा करते हो, If you serve someone who is distressed or ऐसी सेवा unhappy, करते हो कि ये and बहुत if you दुखी है, think that he is very उसका मतलब sad and he is so much distressed मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं उसकी and सेवा I am a करूंगा। great person, so let me serve him. आपने उसकी सेवा की है, You served him, लेकिन आपको उतना हो सकता है आपको पुण्य मिले, you will get some piety by लेकिन आप that, ये सोचकर उनकी सेवा but करो कि नहीं if you उनके serve हृदय that, में परमात्मा बैठा because है, in his heart कृष्ण there उनके is हृदय the में है, super soul, और Krishna is कृष्ण कहता residing है कि in उनकी them, सेवा करनी and if चाहिए। Krishna और आज मेरे and जीवन में Krishna ये has अवसर told है, that we should serve him, and तो now I कृष्ण have की this जब हम उसकी opportunity to सेवा serve. करेंगे तो वही कर्म भक्ति हो जाएगी। So if समझ, we do with this intention, then this ये work अंडरस्टैंडिंग में बड़ा अंतर है। जैसे will गौ माता की सेवा, become the service of एक the एक Lord. जीव दया So there करती है, is a गौ very माता एक जीव small है, line that और separates जीवों the के two. ऊपर दया करनी चाहिए, और दया समझकर So यदि गौ सेवा if करो तो we वो पुण्य do प्राप्त होता है। charity for the cows because we feel they are miserable, then it will give us only गाय piety. कृष्ण जी But को if we कैसे think that प्रेम करते the हैं, cows are गौ beloved माता of the कृष्ण की Lord शुद्ध भक्ता है, ये and सोचकर she is a करोगे pure उनकी devotee सेवा, of the Lord, and शुद्ध then if we भक्ति हो serve जाएगी। the cows, कर्म एक then है, it will be लेकिन considered उस as कर्म का pure loving जो devotional service of the चेतना Lord. है, जो That is भावना Shuddha है, Bhakti. उस पर So the उसका फल consciousness डिपेंड करता behind है। our work, सो and that कर्मण्येवा depends the fruit अधिकारस्ते मा of our फलेषु work. कदाचन, कर्म तो करने ही है, लेकिन कर्म का भोक्ता मैं हूं, इसके फल का अधिकारी मैं हूं, तो वो कर्म We are विकर्म हो bound जाएगा, or we have a वो choice to आपको work, कर्म के बंधन but में डाल देगा। if we do it with लेकिन the आप यही consciousness कर्म that कीजिए, I'm doing it for my लेकिन sake, उसका then फल जो it भी will मिले bound उसके us भोक्ता and कृष्ण turn है, into तो vikarma. वही But कर्म when we शुद्ध think that भक्ति हो the जाएगी। enjoyer is the Lord, and तो still I'm विकर्म doing this सात work सौ for श्लोकों में His है, happiness, then 700 it will श्लोक ऐसे become प्रमुख unalloyed श्लोक हैं। devotional service towards the Lord. ऐसे So, of 700 the श्लोक 700 verses, दिव्य हैं, this is the second लेकिन verse. 7 में से 2 All दिव्य these हैं। verses are ये transcendental and तीसरा divine, नंबर है but this is the श्रीमद् second verse. भगवद गीता So, के now the third one is छठे अध्याय, अभी जो from the Srimad आज Bhagavad के इस Gita, अध्याय का पाठ 6th हुआ, chapter, उस छठे अध्याय the का chapter ये which 35 you were नंबर reading श्लोक right है। now. So, this is verse 35 from them. असंशयं Same. महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासने तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। कृष्ण ने जब कहा And कि Krishna अपना मन said, मुझ में लगाओ, you मन should मुझ में focus लगाओ, your heart on me. तब अर्जुन कहते हैं चंचल Then मही मन Krishna कृष्ण replies, प्रवृत्ति बलवत् Krishna तस्य Chanchala hi mana विद्याद्रष्टुं Krishna. वायुवेगस दुष्करम। कृष्ण में मेरे गांडीव के बल पर वायु को I वश में कर सकता हूँ, on my लेकिन मन को वश में नहीं कर bow सकता। strength I can control the air तब or अर्जुन the कहता है wind, but I कृष्ण cannot control my कहते हैं mind. कोई बात नहीं, Then Krishna replies, no अपने worries, मन को मुझ no में problem. लगाना ये सबसे बड़ी You बात should, है। मतलब ये टॉप मोस्ट की चीज है। सारे वेद शास्त्र सारी so साधना का the सार यही है essence of all the Vedas कि and हमारा मन the sadhana भगवान में is लग जाए। that we should focus लेकिन our ये बड़ा mind on ऊंची the Lord. चीज है, But it is a great यदि feat ये to नहीं हो perform. सकता तो कृष्ण Although we कहते हैं can't do that, अभ्यास ने Krishna तू says, कौन्तेय। समझे Abhyasanena tu अभ्यास, Kaunteya. That means, oh, अभ्यास ने Kaunteya, you तू need to कौन्तेय। practice. एक बात याद Practice रखिएगा, is very कोई important. You व्यक्ति should एक ही remember one दिन thing. में बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो जाता। A इस person दुनिया cannot में जितने भी become सफल लोग हैं, wise in one day. All the successful सफल people in लोग this आप world, अपने क्षेत्र में जिन जिनको सफल मानते हो, in their field, so whoever कोई you आपने consider to अपनी be a माँ के पेट success से in सफल your होकर field, नहीं आया, so they were या not कोई डॉक्टर successful आपने from the ज्ञानी womb of their या कोई mother, विद्वान or या फिर they didn't become ऑफिस में या successful कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई एक दिन में महान नहीं हो जाता। in any field. अपने जीवन में No उन्होंने one can अभ्यास
become successful, but in their throughout their life they have practiced, and that practice happens gradually by doing small small things and by practicing on a daily basis. फिर एक दिन क्रांति होती Then है. one day सो कृष्ण we यहाँ will पे have a सिखाते revolution. हैं So Krishna here teaches the importance जीवन of में practice हमारा in जो our लक्ष्य life. है, जो गोल है, Whatever goal we जैसे have in our भक्तों का life, तो एक ही लक्ष्य like है, for कृष्ण devotees, the प्रेम goal करना. is the लेकिन वो love कृष्ण of the प्रेम एक Lord. दिन में तो नहीं होगा. We cannot जो attain एक it दिन in में one होता day. है वो प्रेम नहीं Whatever है, can happen in one लव day नहीं is है. not love, हमारे it is गुजराती में एक कहावत sentimentalism. है, In Gujarati, आंબા there is a saying, આંબા ન પાકે, the mangoes don't આંબા ripe ન પાકે. અને if we hurry. इंस्टेंट જે आंबा केरी को पकाई जाती है उसमें वो रस नहीं होता, वो And दम नहीं. if they try to ripen the सो mango in अभ्यास one day, धीरे it धीरे is not धीरे धीरे as अभ्यास sweet. करते करते So we जाके should क्रांति होती है. practice, कोई and अचानक से daily, महान नहीं daily, बनता, when we do that, धीरे then धीरे होता है. it becomes सो a कृष्ण ने हमें revolutionary दिया feat, and nobody becomes कृष्ण successful की in one क्या है, day. नवदा So भक्ति. Krishna कि focuses शास्त्र on श्रवण करें, है ना, abhyas, that is practice. So 5 मिनट, it 10 मिनट, implies आधा घंटा, Nada एक Bhakti, that घंटा, is the 9 limbs of अपनी bhakti. कैपेसिटी को So we should बढ़ाइए. practice half hour, 1 hour, and we should increase our capacity कलयुग on है ना, तो आजकल gradually. लोग The, इतने this कंफर्ट Kali जोन में Yuga, चले जाते हैं we are in so much कि फिर comfort पेट zone बढ़ता है, शरीर बढ़ता है, that और फिर they हमारा फटेगा. become fat. फिर सोचते हैं कि यार बहुत And then they बढ़िया है, तो think, आइए एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं. फिर जब जाते हैं एक्सरसाइज करने तो कुछ अच्छे this way, लोगों को and देखते they हैं go तो to सोचते हैं यार exercise. बस एक ही दिन And में when they एक्सरसाइज see कर लेंगे, them, they say वेट that उठा we लेंगे, will कार्डियो कर लेंगे. exercise in one day दिन में and इतना get, करते हैं कि फिर दूसरे they दिन do सारी हवा निकल जाती है, so सब much कुछ exercise एनर्जी on day खत्म हो one जाता that है. the other day तो इसे they एक have दिन में नहीं no होता, strength to go at all. धीरे So it is धीरे not आगे achieved in बढ़ाओ, one day. धीरे धीरे Gradually, होई. we have माली to सींचे सो perform घड़ा, and attain it. ऋतु आए फल होई. कोई पौधा है, आप सोचो कि इसमें मैं 100 घड़ा डाल दूंगा There पानी is का a तो plant, तुरंत फूल फल and देगा, if you नहीं. water it by 100 pots of धीरे water, धीरे रे you will बाबा, get the flower or fruits अभ्यास करते immediately. जाए, No, करते जाए, we समय will आने पर we should फूल भी keep on फलेगा, practicing. फल When भी the time is लगेगा. opportune, we will get the अभ्यास fruit करते रहो. and the flowers as well. But we need to practice. अभ्यास के ऊपर कंसंट्रेट करें, So we फल should तो धीरे focus धीरे on आएगा. practicing. The सो fruit कृष्ण ने we बताया will get हमें ये बहुत gradually सुंदर one day. अभ्यास. अंत में एक छोटी अर्जुन की बात बताकर गोपी गीत की ओर आगे बढ़े. So कौरव let me just share one more जब point, छोटे थे, and then we will proceed to Gopi Geet. When Kauravas and Pandavas were small धनुर्विद्या or were children या at that शिक्षा time, लेने के लिए when गुरु they were द्रोणाचार्य के आश्रम में गए. living in the hermitage अब of गुरुकुल में सबका प्रथम दिन Dronacharya, था, कौरव और पांडवों का. so that was the first day of तो Gurukul फर्स्ट डे for इन गुरुकुल all of them. स्कूल, तो केवल So first इंट्रोडक्शन day होता in है, their school पहले or दिन थोड़ी सब Gurukul पढ़ाया जाता है, was, पहले दिन तो is इंट्रोडक्शन usually an होता है. introduction. तो गुरु द्रोणाचार्य ने सबको कहा अपनी अपनी रुचि के अनुसार बताओ, So Guru Dronacharya दुर्योधन told that तुमको क्या just पसंद give है, me बोले what मुझे गदा पसंद है, interests you. तो तू गदा ले So ले. युधिष्ठिर he मुझे भाला पसंद है, asked अर्जुन मुझे धनुष बाण पसंद है. and they भिन्न all हो गए. selected the weapons of their सबकी choice. जो रुचि थी सबको अस्त्र शस्त्र दे दिए, बोले ये शस्त्र अपने पास Dronacharya रखो, कल told सुबह them to keep the हम weapons, इसका and अभ्यास शुरू करेंगे. he तो said that from द्रोणाचार्य ने tomorrow we will सारे start इंट्रोडक्शन practicing. किया और सारे बच्चों को सुला दिया, Dronacharya कल सुबह हम introduced शुरू करेंगे. and made them to अब sleep उस दिन and said that we will अर्जुन start tomorrow. On this अर्जुन को night, कुछ आवाज आई और जग गए. Arjuna अर्जुन ने heard बुला लिए some गुडाकेश, noise जिनकी and निद्रा he अपने कंट्रोल में है. अर्जुन awakened. उठ गए So his name is और Gudakesh, one who can आधी control रात को his 2 बजे आवाज कहां has से a आ रही control है. on his sleep. So he was जहां wondering से आवाज आ रही थी from where is the वहां चलते sounds चलते coming चलते चलते अर्जुन at two पहुंचे o'clock at night. So gradually he और उस moved कमरे में in जाके search कहा of the कौन है noise, यहाँ and पर. in that room he तो asked, "Who is किसी ने there in आवाज this दी, room?" भाई मैं यहाँ पर हूँ. अर्जुन ने कहा Who भैया तुम replied, "I am here in this room." Arjuna said that, भूख "Oh लगी brother, है, what are you doing here?" He said, रात "I को 2 felt बजे भूख hungry. लगी थी,
and I'm eating वो छोटे से the अर्जुन, वो laddus. बालक थे, So छोटे से अर्जुन ने कहा बाबा Arjuna, मुझे who नहीं was a समझ में आ small रहा है child, said, I'm कि unable to गुरुकुल में understand. लाइट नहीं है, In this ना Gurukul, there पंखे is हैं, no electricity or रात power को or जहाँ no अपना lamp. हाथ भी ठीक से And हम देख नहीं पाते, 2 o'clock अपनी at night, गठरिया से when we उठकर cannot even किचन में see आ our गए own और hand, किचन में आकर you लड्डू का came डिब्बा from your खोल hermit दिया और डिब्बा cottage to खोलकर the लड्डू kitchen and सीधा you have आपके मुंह found में गया। the laddus and you ये found them बड़ा and you're eating आश्चर्यजनक it. कार्य है। I'm really तब भीम ने कहा amazed by it. Then अभ्यास, Bhim replied, that is the ये शब्द जो यहाँ practice, पर है ना, the अभ्यास word that नहीं is here. कौन्तेय। भीम ने कहा अर्जुन अभ्यास Bhim मेरे said, खाने का अभ्यास है, I have a practice of इतना भी eating. दूर लड्डू हो मैं खोज लेता हूँ। बस अर्जुन तो अर्जुन थे, अर्जुन को वहीं से ये पॉइंट मिल गया कि So यदि Arjun, अभ्यास हो when he heard तो that, एवरीथिंग इज he पॉसिबल, got this कुछ point. भी संभव हो Everything सकता is possible. है। और अर्जुन रात को ही अपना गांडीव उठाए And और धनुष बाण से जो he took जो his दूसरे Gandiv, दिन the जो bow, लक्ष्य को तय and करके रखा था कि कल प्रैक्टिस करेंगे, अर्जुन he रात को 2 बजे thought से that ही प्रैक्टिस whatever he करने was लगा। supposed to target, जब next day he गांव की started आवाज आने targeting at लगी the night. तब When द्रोणाचार्य जग गए, Dronacharya heard the noise of the गाय bows के and जैसे arrows, बढ़कर देखते रहे ये कौन he है, was awakened and he तो thought that द्रोणाचार्य ने देखा who कि is it? अर्जुन धनुष And बाण then he चला रहे saw हैं। that Arjuna was practicing with his द्रोणाचार्य ने bows कहा and क्या arrows. बेटा कल सुबह का Dronacharya said that प्रोग्राम है, we आज will क्यों do इस it समय शुरू tomorrow. किया? Why you have अर्जुन started ने at कहा the night? गुरुदेव मुझे अभी अभी पता चला Arjuna है said that I कि have just अभ्यास now करने से learned. सब कुछ संभव है। तो जब अभ्यास से सब पॉसिबल है तो So फिर when देरी काहे की? by जाओ practice अभी से everything is प्रैक्टिस possible, करने then लगो। why we should wait? So I have केवल started practicing द्रोणाचार्य from today. अर्जुन के इस So एटीट्यूड पर by इतने this प्रसन्न हुए, attitude, Dronacharya was so much द्रोणाचार्य ने कहा satisfied अर्जुन and तेरे happy. अंदर He ये जो said, उत्कंठा है, जो तीव्रता you है have अभ्यास this करने की, inquisitiveness मैं तुझे वरदान देता हूँ to कि इस दुनिया work का and learn. सर्वश्रेष्ठ I धनुर्धर give बना you a के boon that रहूंगा। I will make you the यद्यपि greatest द्रोणाचार्य का archer of पुत्र your time. अश्वत्थामा था, Although लेकिन फिर भी उसने Dronacharya's अर्जुन son को was सर्वश्रेष्ठ Ashwathama, yet धनुर्धर he बनाया। made कारण Arjuna the greatest अभ्यास archer of करने all. की वृत्ति Why? थी। Because he had this इस दुनिया में वही टॉप मोस्ट पद पर efficiency or रह सकता है attitude जो to practice अभ्यास more. करता A है। person can only be successful if they हमारा keep on जीवन है दूसरों practicing. की देखा देखी What में happens is बाज we नहीं आता just है। try वो to इतना imitate आगे है, वो others. इतना महान है, वो इतना महान है, हमारा तो दूसरों को देखने में ही टाइम चला जाता है। All our energy in दूसरों को just देखने में pondering टाइम over वेस्ट ना others' करें, success. अपना लक्ष्य Instead तय of करें और अपने लक्ष्य wasting की ओर times on अभ्यास seeing में लग others, जाए। we should set our goal लोग and आपको try to देखेंगे, आपको practice on दुनिया them. को देखने की Then जरूरत नहीं है, people will look at you. अपने You need अभ्यास not में to look लग at जाओ। people. You should work नहीं तो and गौतम बुद्ध की put on वाणी में exercise. लिखा है ना कि बंदा आया, मेरी प्रोग्रेस मेरी प्रगति ही नहीं होती है। So there is a pastime when की प्रगति होती है, Gautam फलाना कितना आगे बढ़ Buddha गया, वो कितना was आगे बढ़ asked गया, by a person गौतम that बुद्ध so ने many पूछा people are तेरी successful, प्रगति I'm क्यों not नहीं है? progressing. तू Gautam दूसरों Buddha को ही replied, देख रहा है, you're not अपने बारे में progressing सोच रहा because है। you're only looking अपने at others. अभ्यास You're की not ओर thinking कंसंट्रेट about करो, yourself. You need वही to उसमें लग जाओ। introspect and सो यहाँ work पर for or कृष्ण ने कहा practice for your अभ्यास progress. हेतु कौन्तेय So here Krishna वैराग्येण says च गृह्यते। सो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के in सबसे this सरल manner में से of the 7 सबसे जो verses, प्रमुख, the 7 verses इसमें that are कोई फिक्स important, नहीं है, आप ऐसा मत we will सोचना discuss. कि किसी संत ने आचार्य ने बस ऐसा मतलब मोहर लगा कर कह दिया ये सा, ये So जस्ट हमारे it's just श्लोक को याद करने का टाइम नहीं because है। we don't have 100 श्लोकों might से not have पढ़ने का time टाइम to ना हो, memorize खुद 100 जाके चुन के 700 or 100 500 verses. श्लोक So these are the मैं 7 आपको बता verses रहा हूँ। that I'm तो इनमें से sharing 3 with श्लोक you. आज आपने सुने, So we have shared 4 or नहीं heard 10 3 सुनेंगे, today. The गोपी गीत rest का 4 we बहुत will बड़ा listen पोर्शन बाकी है। tomorrow. So there is a great भावना portion माता जी की that we are भावना behind in है Gopi Geet. कि And भगवत Bhavna गीता Mata के ji has this desire that at least गोपी गीत के 19 श्लोक स्पर्श that तो हो at जाने least चाहिए, we should उसका touch at अर्थ least तो the समझ 19 में verses आना of Gopi चाहिए, Geet. नहीं? At least we should be तो able to सो आइए understand हम the 19 पहले भगवत verses. गीत का गान करें So और गोपी गीत का let's first स्तोत्र पढ़ recite the करके Gopi Geet. हम गोपी गीत की कथा की ओर आगे बढ़े। Question. रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी Hare Krishna, I welcome you all, the loving devotees of Srimad Bhagavatam. इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ The senior devotees of the International Society of Krishna Consciousness is gone. दूर से I also welcome देश विदेश से you all who have gathered from all the parts of the world through the medium of Facebook, YouTube, etc., all the listeners, and बड़े भाव और in प्रेम से particular, I extend my warm welcome कथा का to आयोजन करने the वाले loving, with their loving heart, who have organized this beautiful katha, the denizens of New York, USA, Sri Rasik Prabhu and Bhavna Mataji, उनके सुपुत्र केतन and their प्रिया family, son, उनकी बेटी Ketan and डॉक्टर Priya, गोपी their मुकेश daughter Dr. Gopi and प्रिया Mukesh, आर्या आरव आयान और इन सब के लाडले शिशि राधा मधुर गोपाल, children of the home, and their Laddu Gopal, Shri Madhu Gopal. आप सभी भक्तों का I welcome श्रीमद् you भागवत all कथा के षष्ठ दिवस में on the sixth day पुनः एक of the बार Srimad हार्दिक Bhagavatam स्वागत Katha. I एवं welcome you all आप and सबके चरणों में please accept हमारा our humble प्रणाम। obeisances at your lotus feet. राधे श्याम। Radhe Shyam. श्रीमद् भागवत Srimad Bhagavat गोपी गीत परिचय Gopi Geet पार्ट Introduction 3। Part 3. मैं ठीक से मैसेज समझ नहीं पाया था, I couldn't understand the message तो properly मैंने अभी अभी निवेदन किया and I कि requested गोपी गीत के सारे श्लोकों को that हम स्पर्श we will करेंगे। try to touch all the पर मैंने verses of भावना Gopi माता Geet. जी ने मैसेज भेजा, I got the स्पर्श ही message करना from है, her. We need just आस्वादन करना need है। to touch them. We need to समय relish का them. अभाव ये था, अभी So अभी her मैंने पढ़ा कि प्रभु कोई बात intention नहीं, was that ये गोपी गीत no पार्ट worries, 3 है, where no matter, भाव even if 4, it's part 5, 3, 6 जितने भी even if भाव we have, थे, no matter how लेकिन many ये parts we पूरा have, गोपी गीत but भगवत कृपा से, मधुर गोपाल के आशीर्वाद से हम लोग आयोजन करेंगे, and His blessing, और ये we गोपी will गीत keep आप on हमारे लिए organizing. रिजर्व रखिएगा। And please keep this Gopi Geet reserved for सो us. भगवान आपको शक्ति दे, और So may the Lord बहुत give अच्छा you भाव है the strength. कि हमारा संकल्प है कि पूरा गोपी गीत कंप्लीट करके ही They have a great हमारा संकल्प emotion पूरा होगा। तो आपका that संकल्प our है तो इतना तो vow will निश्चित be है complete when we are कि able ये to पार्ट relish it. 3 है और गोपी गीत So के हम it's sure that 8वें 9वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। we have reached almost मतलब जब तक 18th or 9th गोपी गीत verse. समाप्त नहीं होगा, So by the समाप्ति time the काल, Gopi Geet तब तक ना does आपको not कुछ conclude, होने वाला है, ना मुझे till that कुछ point, होने वाला है। you तो and इतना
I would be safe. So we are saved at least for 2 years. Because even the Lord wants or desires. सो भगवान भक्तों के माध्यम से अपने संकल्प को संपन्न कराते This हैं। opportunity. So the Lord enables the devotees, his devotees, ग्रहणीय है। आइए to perform such feats. So करते हुए let's relish के इस दिव्य श्लोक का these divine, चिंतन this divine verse of Gopi Geet. Let's remember, discuss this further. In this verse, परिचय के तौर पर we are समझने का just प्रयास कर रहे trying हैं। to understand बाकी as an व्याख्या introduction, because the बहुत बड़ी हो interpretation सकती है। could केवल be परिचय किया जा huge, रहा है magnificent, और but हम we are just शुरू कर रहे introducing हैं। it परिचय भी and we कितना विशाल है। trying to understand. गोपी Even the कहते जानते introduction हैं is so huge. कि गोपी So गीत you गाते all know हुए the background मानो कृष्ण गोपियों से कहते हैं that while the कि gopis आप are मुझसे reciting प्रेम this Gopi करने का Geet, दावा कर रहे हो, Krishna says that you claim that you परंतु love जहाँ me, सच्चा प्रेम होता है but when there is और a वहाँ true प्रेमी love, यदि चला जाए then if तो the प्रेमिका की lover मृत्यु हो leaves, जाती है। then if the सो beloved मैं leaves, the आपसे lover यदि dies. हमसे चला गया So I'm not आपकी तो here. मृत्यु हो जानी चाहिए, So you all should आपसे तो have मर been जानी dead. चाहिए। You should all have died, आप फिर भी जीवित हो, but you are still इसका कारण क्या alive. है? What is the reason behind the तब same? गोपियां कहती हैं कृष्ण Then the gopis say, O कृष्ण आपके Krishna, विरह में तो हम कब की मर गई होती, we would have died क्योंकि long आपका back विरह जो in है your separation, because your separation तपते लोह पात्रे is यथा like चीरम जलम। on the burning कृष्ण hot आपके विरह में हमारी iron स्थिति कैसी pot. जानते हैं? You know what is our तपते लोह situation in पात्र की separation from तरह, you? As if on the burning hot जैसे iron pot कोई गरम गरम लोहा हो there और उस तप्त is गरम लोहे के a ऊपर पानी की water बूंद गिरे droplet on that iron pot, और वह पानी की बूंद and उस गरम गरम that लोहे water के ऊपर droplet बहुत on तड़पती that है, pot gets मचलती है, agonized. It और shivers, फिर कुछ देर तड़पने and के बाद after some time, अपना अस्तित्व छोड़ देती being है। agonized by this सो situation, कृष्ण it leaves आपका its विरह body, the जो है water evaporates. So तप्त लोह the पात्रे separation उस गरम from गरम you लोहे is के like समान है और the हमारी स्थिति उस that पानी की iron बूंद के pot, समान है। and our situation is like that of the आपके water on that आपके hot विरह iron रूपी pot. अग्नि में On हम लोग this तड़फड़ा रहे fire of हैं, separation, we all are agonized, लेकिन distressed, वह गरम लोहे के ऊपर पानी की बूंद कुछ but देर तड़फड़ाती हैं और the फिर water अपना droplet अस्तित्व छोड़ देती हैं, वो on धुआं that होकर iron मानो मर pot जाती हैं। लेकिन कृष्ण dies and आपके leaves विरह में eventually its body. तड़प तो But रही हैं in your separation, लेकिन we मर are नहीं पा agonized, रही हैं। but we are क्यों? unable to क्योंकि die. तव कथा Why? Because अमृतम tva तप्त katha जीवनम, amritam tapta jivanam. आपकी कथा तप्त Your लोहे के समान pastime आपके विरह में on हमें जीवन प्रदान this कर रही हैं। hot iron pot, like separation, is providing सो us a आपके lifeline to विरह में जीना survive. बहुत इजी है श्याम So it सुंदर। is very easier. एक It is श्लोक में easier to die in your आचार्यों ने बहुत separation. सुंदर टीकाएं लिखी हैं। There are very beautiful तो वहाँ एक interpretations by आचार्य कहते acharyas. हैं There, one कि श्रीमती acharya राधा रानी कृष्ण के refers विरह में or मूर्छित हैं, implies, he says that तो कोई Srimati आकर Radharani उनको is जगाता है, उनकी मूर्छा unconscious को दूर करने का प्रयास in कर रहा है। separation from Krishna, and तो others are ललिता trying to विशाखा revive कहती हैं him. कि So संत Lalita सखी Vishakha reply, तदुदंत यदि यदि सखी तू राधा को सुख देना चाहती if है you want तो इनको मूर्छा से Radha बाहर मत to निकालो, be happy, then please क्योंकि don't ये bring her मूर्छा out से of बाहर the आएगी unconsciousness. तो Because if she कृष्ण के विरह becomes में conscious, तड़फड़ाने लगेगी then she will और be कृष्ण के agonized in विरह में separation from तड़फड़ाना Krishna, उससे and अच्छा है कि ये being मूर्छा में पड़ी agonized रहे। with in तो separation with Krishna, मुग्धावस्था it's मूर्छावस्था better that they are ये मृत्यु unconscious. अवस्था
the situation of unconsciousness or दारुण death कठिन अवस्था है is easier यह than अवस्था। the मृत्यु तो situation of बहुत इजी separation है, from the लेकिन मृत्यु lover. से भी कठिन है Death is easier, प्रेमी it is का विरह। far great, जिसको हुआ है वो जानते हैं। or it's tougher than separation from the beloved. लेकिन Those उस who मृत्यु have से भी gone through कठिन might अवस्था में understand. कृष्ण So, in this हम लोग difficult जी रहे situation, हैं, we इसका are कारण able बस to इतना है survive, and the त्वं reason behind the कथामृतम same is तप्त जीवनम। Svakatham Tapta आपके अमृत Jivanam. रूपी अमृत Your हम the तपते nectar हुए of your दत्त pastimes गोपियों को जीवन is दे रही है। giving धीरज us a lifeline. से इस प्रकार It is making us गोपियां survive. कृष्ण So, कथा in को this सुनाती manner, रही। the gopis tell तत्कालीन Krishna. प्रसंग कैसा हुआ होगा? कृष्ण So, के विरह what में might have गोपियां happened? तड़पती हैं तो The कोई एक दो gopis गोपी आकर are कृष्ण की agonized in चर्चा separation करेगी, from हे Krishna. सखी So, एक some try मंत्री to से हमारे discuss साथ about बातें Krishna थे, that he कुछ used to समय के लिए steal सखी butter कृष्ण from ऐसे हमारे साथ the बातें pot करते थे, and कृष्ण he ने used to ये किया talk वो with किया, us. बस He did कृष्ण this की and he did चर्चा, that. कृष्ण की So, the कथा discussion of सुनकर Krishna, by just listening to गोपियों that, के प्राण टिके हुए हैं। the gopis are सो तप्त able to जीवनम का survive. एक अर्थ यह है, So, तप्त there माने is one meaning of कृष्ण का tapt, विरह। that is the separation कृष्ण के from the विरह Lord. में मरने वाली गोपियों को जीवन दे The रही है gopis who would कृष्ण have का died अमृत। are saved हम्म? or are तप्त hanging जीवनम के with पहले just तो हमने बहुत सारे the अर्थ सुने, elixir of the pastimes of एक the Lord. अंतिम अर्थ सुन So, लीजिए फिर we हम have आगे heard बढ़ेंगे। quite many meanings, मेरा मन but भर नहीं let रहा me है, मैं add कल कहा one था कवि वीर thing. मीठम परसों, I एक अर्थ but I'm सुनिए not मेरी। satisfied, so let me तप्त add one का more एक meaning अर्थ here. होता है The meaning मृत्यु। of tapta jivanam अभी here. हमने So तप्त the का अर्थ tapta क्या means किया? तप्त death. माने विरह, आपने देखा ना, So तप्त right लोहे now we have पात्रे said यथा that जीवनम। tapt implies सो तप्त माने लोहे के separation. समान वो दारुण विरह। ये So अर्थ किया। that is the तप्त का extreme एक अर्थ तो विरह जो हमने situation सुना, or तप्त distress का दूसरा अर्थ because है of मृत्यु। separation. But the second तप्त meaning माने is मृत्यु, death, क्योंकि मृत्यु अवस्था भी दारुण because अवस्था death है, कठिन also अवस्था is an है, extreme बुरी अवस्था है। situation. तो गोपियां कहती हैं कि So तप्त gopis जीवनम, say, कृष्ण Tapta आपकी ये Jivanam, जो कथा है your वो उनके pastime मृत्यु से जीवन माने जिला देती है। can give अर्थात a कृष्ण lifeline आपकी to कथा a person. किसी It भी can मनुष्य revive को a dead मृत्यु person. से बचा देती है। It can save a person यदि कोई from कृष्ण death. कथा सुने ना If someone listens to the तो वो pastimes of the मृत्यु से Lord, बच जाता है। then he और can be इसका saved ज्वलंत from प्रमाण death itself. श्रीमद् भागवत में And हम देखते हैं the अनेक shining जगह पर। example of that is in Srimad Bhagavatam in many आप चौथे places. स्कंद में देखो, If we श्री see ध्रुव महाराज or take a बद्रिकाश्रम reference में from the ऋषि fourth मुनियों canto, के बीच में कथा सुन रहे थे, और उन हजारों ऋषि that मुनियों के बीच में ध्रुव महाराज को लेने के Dhruv लिए Maharaj was listening to the भगवान के pastimes of the Lord पार्षद नंद from और all सुनंद the आए sages and saints, and the associates और of the कहा कि Lord, महाराज आप विमान Nand में and Sunan, बैठिए, came and हम told आपको Dhruv वैकुंठ ले Maharaj जाएं। that you should accompany us to अब Vaikuntha, the विमान eternal धरती abode से of the थोड़ा Lord. सा ऊपर था। So मैत्रेय ऋषि the कहते हैं कि उसी समय vehicle साक्षात was a मृत्यु के little देवता ध्रुव महाराज के सामने up प्रकट हो गए। from the ground, हम लोगों के and सामने भी, at दुनिया that के time सामने भी मृत्यु the देवता death आते हैं, personified, लोगों के पसीने छूट the जाते Lord हैं, of death, that is Yam लेकिन or मृत्यु देवता Mrityu, ध्रुव महाराज that is के सामने दोनों personified, हाथ जोड़कर he खड़े रहे appeared with folded hands in और front ध्रुव of Dhruv महाराज के Maharaj चरणों में बैठे और and महाराज sits at the lotus feet of Dhruv Maharaj यूं तो and इस tells संसार को छोड़ने that से पहले before anyone मैं leaves this सबको मार world, देता हूं, I लेकिन आपने कथा kill सुनी everyone. है, But as you have दुनिया और heard the ऋषि pastimes मुनियों of के the बीच Lord, में भगवत कथा सुनी है, sitting इसलिए midst of all the मैं sages and दोनों saints हाथ throughout your जोड़कर life, आपके सामने बैठा therefore हूं। I fold ये both my विमान जो hands है ना and I bow धरती down से at थोड़ा your ऊपर है, feet. इसलिए So the महाराज एक काम करो, vehicle is आप little अपना above the पैर मेरे ground. मस्तक पर So रखो और please विमान में keep चढ़ your जाओ feet on my head और भगवान and के धाम को प्राप्त हो जाओ। और उन ऋषि मुनियों के देखते you देखते can ध्रुव महाराज reach ने the मृत्यु के vehicle and मस्तक पर अपने then चरण रखा go to the और eternal abode of विमान the में Lord. चढ़ गए। And there is a reference that भागवत कथा सुनने Dhruv वाला Maharaj kept तप्त his feet जीवनम on the death मृत्यु
and went to the eternal abode of the Lord. So a person who reads or listens to Bhagavatam, he is, he is able to be victorious, and he gets the eternal abode of the Lord. That is the glory of the proclivity of the Lord, which is mentioned, or we can, it is portrayed in the life of Dhruv Maharaj. How many reference should I give? You all are aware that in Naimisharanya, all these sages were performing a fire sacrifice of Homa, and Sud Goswami arrived one day. So all these sages, they sat at the lotus feet of Sudji, that you should share the Srimad Bhagavatam with us. So he said that I will speak, but how much you want to listen? So not like us that you should make us, you should speak for 7 days or 1 hour or two. But the sages of our country have said that for whole 1000 years we want to hear the proclivities of the Lord from Srimad Bhagavatam. Then Sud Goswami said, O sages, I can speak for 1000 years, but are you aware that the Kali Yuga is already here and it has started? So the life of people is 100 years. So you will die in 100 years. So who will listen to the Bhagavatam? Then Shaunakadi sages replied, O Sut Maharaj, don't be scared of death. The Lord of Death, that is Yamraj himself, is sitting on the last lane. So till the time the Katha goes on, there won't be any death. So that implies whoever listens to the pastimes of the Lord, his account is removed from the account of Lord Yamraj, because they're aware that this devotee belongs to Lord Shri Krishna. So now he has no authority on him, only Krishna has authority on him. So tapta means death and jivan means life. So it can make us live. That implies in our life, the whatever time we listen to the pastimes of the Lord, that time is not considered or counted in our life. That means if you are supposed to live for 100 years and you have heard for the Katha for 25 years, then you will live for 125 years. Because the more you listen to the pastimes, it will not be added in your life. So if I ask you, if you want to live long, what you should do, you should listen to the proclivities of the Lord. Gurudev used to say that when I was 16-year-old, astrologer said that in 4 or 5 years you will be dead. But I took the shelter of Srimad Bhagavatam. I got the order from my Guru, Srila Prabhupada, to preach Srimad Bhagavatam, and because of the preaching of Srimad Bhagavatam, I'm all 75 years yet I'm alive. It because the time you are under the shelter of Srimad Bhagavatam, that life is not counted in our life. So if you want to live more, we should listen, we should take the shelter of Srimad Bhagavatam. Tapta Jivanam. Tva Katha Amritam Tapta Jivanam. Gopis tell the glories of the proclivity of the Lord for the तप्त जीवनम कविभिरीडितम
कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे कृष्ण, आपके Oh कथा Krishna, महिमा क्या है? one of कवि भी ईडित, the glory of इसके बहुत सारे अर्थ हैं, your pastime is आप केवल Kavi सुनते जाइए। Viriditam. So there are so many कवि भी meanings of the ईडितम, same as well. तो कवि का Keep on एक अर्थ listening. होता है So बड़े the बड़े Kavi लोगों के धनी, implies और great ईडितम माने personalities. रेकमेंड की Iditam गई means है, recommend. मतलब तव कथा कवि Your भी बड़े बड़े pastimes or लोगों के द्वारा proclivities रेकमेंड की गई has है, been recommended by बड़े great बड़े लोगों की personalities. द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है It has कि been यदि prescribed मृत्यु by से great बचना चाहते हो, personalities that if रोगों you से want बचना चाहते to हो, be दुखों से saved बचना from चाहते the हो, distress, तो the बड़े death, बड़े लोगों ने आपकी then कथा को ही रेकमेंड the किया है। famous benevolent people have recommended कभी or कभी यहाँ पे prescribed गोपियाँ कहती हैं your कि pastimes. आपकी So कथा here बड़े बड़े gopis लोग say that निवेदन करते हैं even great कि मेरी personalities कृष्ण कथा सुनिए। request that we should listen to your कभी भी ईडितम pastimes. का दूसरा अर्थ है Kavi bhi बड़े iditam. बड़े Second कवियों meaning ने is ईडित, ईडित माने गान किया है, edit means to मतलब sing. आपकी कथा छिछोरों That ने, ये नुक्कड़ गलियों में भटकने वालों ने, your ये pastimes have ये not been भिखारी sung लोगों by ने, ये rogues or तुच्छ लोग beggars, नहीं, not आपकी कथा बड़े lower बड़े people, लोग but गाते हैं। your pastimes are जो sung महान by है, great, महान महान great लोगों ने people. कवि भी ईडितम माने गाया है। They have sung. आपकी कथा वेदव्यास ने गाई, Your आपकी glories were कथा sung by कबीर ने गाई, Vedvyas, आपकी Valmiki कथा ji. बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने गाई है। Great sages and saints have ये है आपकी spoken कथा की or महिमा। sung your proclivities. कवि भी ईडितम का तीसरा अर्थ है, So the कवि third भी meaning of माने Kavibi कवियों के Iditam द्वारा, is ईडितम माने that means आदृत by the poets or great या personalities. प्रशंसित, बड़े बड़े कवियों ने Iditam आपकी कथा means की praised. प्रशंसा की है। So that implies that great सो बड़े personalities बड़े have कवियों के praised द्वारा कृष्ण आपकी कथा प्रशंसित है। your pastimes. कवियों के समाज में आप ही In की the कथा world बड़ी of प्रशंसित poets, होती है। your pastimes or proclivities are well appreciated and कवि praised. भी ईडितम का अर्थ है, Kavibi श्रील Iditam श्रीधर also स्वामी कहते implies, हैं, Sridhar विद्वद की Sri प्रशंसित Goswami है। says, कृष्ण आपकी कथा बड़े बड़े विद्वानों ने प्रशंसा की है। your बड़े बड़े pastimes विद्वानों ने have कहा है, been praised by कथा wise समानम intellectuals. भुवि नास्ति They किंचन, have said कथा के समान इस there is भूमंडल पर और कुछ nothing नहीं है, else कथा better की कोई तुलना than your नहीं होगी। pastime in this world. It is और कवि भी, uncomparable. कवि माने And Kavi bhi, महाजन, महान। Kavi श्रीमद् bhi भागवत means एकादश स्कंद में Mahajan अनेक or great है, personalities तो like कवि Bhishma. भी माने महाजन, और महाजनो ये न गत से बनता, वो महाजन कौन, And वो who are those महापुरुष कौन, Mahajan? तो Who are वैसे those great महापुरुष personalities? थे। चरणारविंदम श्री चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष कहा गया। So Chaitanya Mahaprabhu has been addressed as श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार कवि भी Mahapurush. ईडितम, महापुरुषों के द्वारा प्रशंसित Means आपकी कथा, by great और महापुरुष personalities की your कैटेगरी में pastime has चैतन्य been महाप्रभु को praised, रखें, and Chaitanya तो श्री Mahaprabhu was चैतन्य kept in this महाप्रभु ने category. अपनी जीवनी में बारंबार So in आपकी his कथा की lifetime, प्रशंसा की Chaitanya है। Mahaprabhu has praised the रूप pastimes गोस्वामी को of उपदेश देते the समय Lord again महाप्रभु and ने again. कहा, While speaking to मानो Rup भैया Goswami तेरे से ही or बीज counseling him, he बारंबार said, श्रवण कीर्तन जल कर ये सिंचन, जैसे एक माली he किसी says, पौधे like में a रोज पानी का gardener सिंचन करता है, waters the plant on a एक daily तुलसीदार, basis, एक भक्त को similarly, चाहिए a कि जीवन में devotee रोज should, भगवत कथा on a का daily सिंचन basis, करे। listen यदि किसी to पौधे में the आप Srimad जल नहीं Bhagavatam to डालोगे तो वो nurture सूख it. जाएगा, If you वो don't नष्ट give हो water to जाएगा। the plant, it will यदि be कोई destroyed. भक्त अपने जीवन में Similarly, if भगवत a कथा रोज devotee नहीं सुनेगा doesn't तो listen to the भक्ति Srimad सूख Bhagavatam on a जाएगी, daily basis, मुरझा the जाएगी, devotion भक्ति एकदम will नष्ट not हो जाएगी। blossom, it will इसलिए श्री चैतन्य die महाप्रभु ने eventually. कहा,
Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has recommended that we should nurture our devotional service with Srimad Bhagavatam on a daily basis. Chaitanya Mahaprabhu adds one more point here. He says that this unalloyed devotional service, like the gopis, and eternal love and relationship towards the Lord cannot manifest immediately. How it will appear? The relationship with the Lord that we have, which we have forgotten, how will that reappear or reignite? By listening to the pastimes of the Lord, it will be revived, and our original form will be revealed. If we try to understand Chaitanya Mahaprabhu, he has said first and foremost Shravan and others as Adi. So the first and foremost is to listen, and Shravana is considered to be the fundamental, others are etc. etc. But to reveal our eternal form, it, listening is most important of all the limbs of devotional service. So great personalities like Chaitanya Mahaprabhu, this Srimad Bhagavatam or Krishna Katha is recommended or praised. So there is another meaning of kavi here, that is an pure devotee of the Lord or exalted devotee of the Lord. So, in other words, a pure devotee becomes a poet. So, who is a great devotee of the Lord? So, we can have take the example of Srila Prabhupada. So, when Srila Prabhupada never used to participate in poetry or debates, etc., but because he was a great devotee of the Lord, therefore, his this quality of being a great poet is revealed. He, when he was traveling in Jalduta and he got heart attack, and immediately he wrote a bhajan. He said that why have you brought me here? What you want me to do? I'm not aware, I'm unaware, but I am the puppet in your hands, so make me dance, make me dance. So what does it imply? That Prabhupada ji wrote such a beautiful poetry, not after contemplating, but he put it, his feelings on the paper. So Kavi bhi here implies great devotees, and Idita means sung. So your pastime, sing, exalted devotees or pure devotees sing. What does it imply? That when great devotees sing your glories of pastimes, then what about people like us? So उपगीयमानाद भव औषधाचो त्रमनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानु वादात पुमान विरज्ये तविना पशुघ्ना. परीक्षित महाराज कहते हैं, So Parikshit Maharaj here recites or says, O Shukdev Goswami, who sings the pastimes of the Lord or Krishna Katha, the gopis say, Kavi bhi iritam. So
He says Nivrit गीयमानाद माने गाते हैं, Grimanad. और Giyamanad उपगीयमानाद means माने to बार बार sing, गाते हैं। and तो Upariye उपगीयमानाद means बार बार गाते हैं कौन? that they sing again and निवृत्त again. तर्ष। Who? Nivrittu Tarsha. निवृत्त तर्ष, तर्ष माने तृष्णा, Tarsha और means निवृत्त माने जो तृष्णा से thirst or निवृत्त हो desire. चुके हैं। Nivrit means who are किसकी relieved तृष्णा? of desire. So संसार what को desire? भोगने की तृष्णा, The प्यास, desire to अच्छी enjoy the अच्छी चीजें senses, खाने की प्यास, अच्छा the देखने की desire प्यास। to eat or drink माने good संसार के things. समस्त भोग आसक्ति से So जो पूर्ण they are मुक्त हो relieved of चुके हैं, all these ऐसे desires of शुद्ध sense भक्त, gratification. निवृत्त Such तर्ष, pure शुद्ध भक्त, devotees उपगीयमानाद, बार बार sing again and श्रीमती again कथा गाते your रहते हैं। pastimes again and again. श्रीमद् भागवत जी में, और गोपियां That इसीलिए is what is कभी भी mentioned in ईडितम Srimad है। Bhagavatam. Kavi bhi सो iditam. कृष्ण बार बार आपकी कथा शुद्ध भक्तों के द्वारा गाई जाती है। क्यों? So Krishna, your दूसरी लाइन में, क्योंकि pastimes are sung again and आप again भव by pure औषधात, devotees. Why? आपकी कथा Because your औषधि है, pastime is Bhav Aushadhat. मेडिसिन है। It is a medicine. अच्छा, मेडिसिन तो दुकान में भी मिलती है। So we can get हमारे medicine in the सार्वजनिक shop as well. फार्मेसी में जो मेडिसिन In मिलती our है, pharmacy, उसे the शरीर ठीक medicine हो that we सकती get, है, we can बुखार ठीक हो cure सकता है, cold, टाइफाइड fever, मलेरिया ठीक हो typhoid, सकता है, malaria, etc. लेकिन पुनरपि But जन्मम पुनरपि मरणम we cannot पुनरपि get जननी relieved of जठरे this शयनम, repeated बार बार माता के गर्भ cycle में of आना, birth जन्म and death लेना, मरना, to जन्म take लेना, मरना, come in the ये womb of 84 mother के and चक्कर से take birth मुक्त and करने death वाली again. मेडिसिन So to भाई get rid आपकी of this न्यूयॉर्क की 84 million फार्मेसी में species, मिलती है? is it available in the pharmacy of New विपुल York? मालविया रखते हैं अपनी फार्मेसी में इसकी Does कोई people दवाई? हैं? ये Malavia keep मेडिसिन such कहाँ मिलती medicine? है? Where is this छोटे मोटे medicine? रोगों की दवा तो For मेडिकल small, में मिल small जाती है, diseases, we can get cured लेकिन or बार बार medicine जन्म by लेना the मरना जिसे pharmacy. भवरोग कहते हैं, But this तो उस भव से, material disease of भवरोग से taking birth मुक्त होने वाली and औषधि क्या dying है? again and again. कृष्ण कथा। So the medicine to get relieved of इसलिए this कहते हैं is भव the pastimes of औषधात, the Lord. That is why it सागर is को said मुक्त Bhav करने वाली Aushadhan, औषधि कृष्ण कथा है। the medicine to get relief of this तो किसी ने repeated cycle परीक्षित of से birth and पूछा, death. अच्छा So ठीक है, if समझ में आ Parikshit गया, is कृष्ण asked, कथा जो okay, है we भव understood that the रोग से pastimes मुक्त of the Lord करती है, can relieve us इसका अर्थ from ये this है repeated cycle of birth कि and death. That सर्दी हो implies जाए, बुखार हो जाए, if और we हम जो are suffering मेडिसिन from लेते हैं कितनी कड़वी fever, होती हैं, cold, etc., it तो is आंख बंद करके the उस medicine that we take दवाई is की very गोली bitter, को गलना पड़ता है, and we somehow have to निगलना swallow that पड़ता है, medicine. और उसमें भी थोड़ा बहुत जो मुंह में रह गया And कितना कड़वाहट still होता है। there is तो some छोटे taste से रोग की दवा or कितनी aftertaste left. कड़वी है, So तो for a भवरोग small जैसे रोग की दवा कितनी disease, कड़वी the होगी। medicine will be तब परीक्षित अपना is so अनुभव bitter. कहते हैं So what कि about ये the कृष्ण कथा medicine that रूपी will relieve us of औषधि सबसे बड़े repeated रोग से मुक्त cycle of करती death है, and birth? लेकिन इसको ग्रहण So करने में Parikshit ji replies मनोविद्वान that how अमृत much. से भी अधिक So टेस्टी है, Parikshit ji is asked how much अत्यंत bitter this मधुर है, हम्म, medicine will be, but Parikshit Maharaj अमृत के replies समान है। that this अब बताइए, medicine is as ये तो sweet उससे बड़े as से बड़े elixir रोग or से मुक्त nectar. करती है, It relieves और ये from मुझे the अमृत के greatest समान है। disease and is as sweet मुझे प्रभु as जी की एक nectar. घटना याद आ रही है। I remember one परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी situation महाराज इस with पॉइंट पर Guru कहते Maharaj. थे At कि एक दिन मैं this किसी point, गांव में Guru Maharaj कथा used to करने say, गया और I मुझे सर्दी was हो गई, speaking बड़ा about this सर्दी और बुखार in जैसा। तो एक बूढ़ी in a माता जी katha, आई and I और was कहा कि suffering महाराज from मैं आपके cold, लिए थोड़ी दवाई and लाई हूँ। a mother came मैंने कहा क्या लाई हो? and she बोले said that हमारे I घर have पर bought गाय है, some देसी गाय है, medicine. तो उस So देसी गाय he का asked what medicine you bought. माखन So she बनाया said, है हमने, I have bought और माखन the में मैंने butter मिश्री of डाली है, the cow और and I have माखन में put मिश्री some डाल करके mishri. लाई हूँ, इसे आप लोगे ना, आपका So, गला and if ठीक you हो take जाएगा, this, आपकी you तबीयत will ठीक be हो जाएगी। relieved of this तो महाराज जी situation. ने कहा कि माता जी So ने the बोला Lord अच्छा, तो said, हमने ले लिया और उसको Mataji खाने लगे, had बहुत so अच्छा much लगा। emotion. हम So सोचे रोग I ठीक took हो it या न हो, बाकी and I माखन मिश्री तो started मिलता relishing it. है। So he thought that even if I'm जब हम not cured, खा at रहे least I थे, am getting ये this महाराज जी का makhan प्रभु and जी का mishri. अनुभव है, बोले जब हम खा So रहे थे when we were तो eating, हमारे एक शिष्य हमारे this पास is the आए, experience of Guru बोले Maharaj, महाराज जी ये क्या and है? one of my बोले disciple आपके लिए came and दवाई said that, है। what are you बोले eating? दवाई
He said, this is a medicine. He said, what happened to you? He said that I'm suffering from cold, cough and cold. So Mataji has bought this butter and mishri. He said that if by this, if we can get relieved from this disease by eating this, then even we want to be diseased. Because if we are diseased, then only we will be able to get this beautiful, sweet relish. So it cures and also is relishable, tasty. That is the attribute of the pastimes of the Lord. So there is a Kamutya Nyay. It is being, it is asked there, who is the one who won't listen to the pastimes of the Lord? The pastimes of the Lord are so glorious, and who will be unfortunate, who will not want to listen to the pastimes of the Lord? An animal eater or a person who has a heart of iron won't be able to listen to the pastimes of the Lord. It is therefore mentioned in Ramayana. असको जगमाहि श्रवणवन्त असको जगमाहि जाहि न रघुपति कथा सुहाहि जाहि न रघुपति कथा सुहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया श्रवणवंत Goswami Tulsidas ji said that in this world, a person who has ears, who, who is the person who has ears in on his body, and if he listens to the pastimes of Lord Sri Ram and is not become, or he doesn't become happy or satisfied, so who will be the person who will not enjoy after listening to the pastimes of the Lord? So a person who has ears, they will definitely listen to the pastimes of Ram or Krishna. And those who have ears yet they don't listen, then Shivji told Parvati that if you have so beautiful ear and still you don't listen to the pastimes of the Lord, those ears that don't listen to the pastimes of the Lord, their ear are not ears, but they are the hiding place of snakes. So only death will enter there. His life will be destroyed. These ears are there so that we could listen to the pastimes of the Lord. So the gopis have said, Kavi bhi iditam, your pastimes are sung by the pure devotees. And not only your pure devotees, but also for your information, not only the pure devotees, but all those who have desire. Iditi also, Kavi bhi means a person who has desire. So there are so many meanings of Kavi. It could be a great poet, a great personality, but it also means Sakami, or a person who is filled with desire, who has some desire. So even those people, these pastimes of the Lord are appropriate. You all are pure devotees. You are in the category of Parikshit and Shuk. Therefore, you are listening to the pastimes of the Lord. But people who have so much desire, so for them also it is very, very necessary. It is mentioned in Ramayana. जे काम नर
सुनहि जेहि गावहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं सुर दुर्लभ सुख करि जग माही सुर दुर्लभ सुख करि जग माही अंत काल रघुपति पुर जाहि अंत काल रघुपति पुर जाहि। कितनी सुंदर बात। ये आप लोगों के लिए नहीं है, But ये this हम is not for you. This is for people like me who are with desire, who have some desire in their heart that our children should be healthy, they should become devotee, they should be educated, there should be a welfare for everyone. So such people who have such desires, and even if he listens or sings, sunahi je gavahi means either listens or sings. So a person with desires, if he listens or sings, what will happen? Sukh sampati nana vidhi pavahi. He will get happiness, opulence, and all types of desires will be fulfilled. What a great thing. So the one word of Gopi, see the interpretation, there's so many meanings to this single word. So in Ramayana it is mentioned, if a person who has desires listens to the pastimes of Lord Ram, then not only his material desires, but in bonus, what he gets, Sur Durlabh Sukh, the happiness or bliss that is even rare for the demigods, he gets that. And not only that, at the time of death, he goes to the eternal abode of the Lord. So, in this manner, pure devotees listen to your pastimes and they relieve their distress of separation from you. But a devotee or a person who has desire but listens to your pastime, his desires are fulfilled. They get blissful life and post death because they have heard your pastimes. They reach your eternal abode. So, how many meanings have we discussed about Kavi Biditam so far? It implies it is recommended by great personalities. It has been sung by great devotees of the Lord. It has been praised by the great personalities. Even the wise and intellectuals have praised it. Even the great personalities like Chaitanya Mahaprabhu have been recommended by him. It has been sung by great devotees, and even those who are not pure or who have desires in their heart, they also sing your glories or your pastime. So there is another meaning of Kavi by the Acharyas or the wise scholars. He says Kavi Trikaladarshi, that means one who knows the past, present, and future. That person is considered to be a Kavi. Iditam means to request or to ask, to request.
So the gopis want to say, Kavi Peditam, your pastimes, even by the great personalities who know the past, present, and future, they have also said or recommended this, and such a great personality was Dhruv Maharaj. It is a beautiful pastime. The 5-year-old child went to the forest of Vrindavan and performed great austerity. And in 6 months, the Lord appeared and he said that you can ask anything. And Dhruv replied, he said, I don't want any boon, although you are capable of giving anything, but I don't need anything because I was in illusion. I was in search of a glass, but I got a diamond. A person who had a desire of $1 who got $1,000. You will not even think. I was looking for a glass and I got the gem or diamond, the Lord Himself. So I don't need anything more. So the Lord said, okay, let me give you heaven. When then Dhruv replied in one verse, he said that you are a small child, O Dhruva, you are unaware. This world is filled of distress and sorrow. So you should do one thing to be happy. Let me give you the heaven. Dhruv Maharaj replied beautifully. This is an amazing verse here. वृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्मा ध्यानाद् भवजनकथा श्रवणेन वास्या सा ब्रह्मणि स्वमहिमन् यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकाललुलिता पततां विमानम्। हे कृष्ण, Dhruva replies, Oh Krishna, the words of Dhruva are amazing. This 5-year-old child spoke such a great thing that even the Lord became mute. Even the Lord would have been went in a train of thought. So, so he is speaking by the mercy of the Lord because Dhruva didn't even knew anything and he didn't knew anything. So what did Lord did? He touched his conch shell with Dhruva on Dhruva's cheek and he got all the knowledge. And by the mercy of Bhagavatam, the knowledge that he acquired, from that he spoke these words. Listen what he says. He says Nivritti, that means bliss. Ya means that. So the pleasure that Tanu means Jivdhari or living entity or a living entity embodied with soul. So the embodied soul get the pleasure by bowing down at your lotus feet or remembering your lotus feet. Dhyana means to remember, Tatpada means lotus feet. So the pleasure that the living entities get in remembering your lotus feet, even they, that is that you cannot even imagine because the past by listening the pastimes of your that pleasure is not even in the situation of Brahman which is there in your pastime. And the proof
is in front. ध्यान में थे और स्वयं भगवान In सामने खड़े Bhagavatam हैं। itself, the Lord आप भी himself तो is मान लीजिए standing 10 मिनट 15 20 in मिनट front of Dhruva, तो but क्या he मैं was इसी in से प्यार trance, है और मैं meditating इसके on the सामने Lord. खड़ा हूँ So तो ये आंख बंद the करके Lord बैठा was है। thinking that I तब am ध्रुव कहते in प्रभु front of आप him जिस and he चिंतन is में in trance. आपकी कथा So में जो Dhruva सुख says है that वो आप the में नहीं है, bliss in वो आपके अंदर नहीं है। remembering you कबीरदास जी राम is बुलावा far भेजा more रोए enjoyable कबीरा even than रोई। you. राम जी ने बुलावा भेजा कबीरदास जी रोने लगे, क्यों? Ramji क्योंकि जो सुख है sent सत्संग में वो वैकुंठ an में नहीं है। invitation to Kabira, and सत्संग में जो Kabira सुख started है वो crying राम जी के because पास नहीं the है। bliss in तो ध्रुव महाराज को congregational दुख है, chanting ये or वेदों की Sankirtan भिक्षा है भक्तों, ये is वेदों का not सार there है even in the eternal abode of the कि Lord. या That निवृत्ति is the essence सुनोताम, of all the Vedic मानव injunctions समाज and को scriptures. देहधारी जीव को So कथा all these श्रवणेन, embodied souls कथा get that श्रवण करने से जो pleasure आनंद मिलता है, by सा just ब्रह्मणि listening to your भगवत pastimes. होकर भी It is even और नहीं rare मिलता है। to the Lord Himself. तो जब भगवत पद में कथा सुनने वाला आनंद नहीं मिलता तो स्वर्ग के लोग कहाँ सुखी हो सकते हैं? So, how can the तो फिर people of स्वर्ग की तो heaven बात ही be छोड़ो, आप मुझे ये satisfied or कहो happy? कि स्वर्ग रख लो, स्वर्ग ले लो, अरे So, कथा you're में जो offering आनंद me है the वो heaven, वैकुंठ में the नहीं है, तो मैं स्वर्ग bliss लेकर क्या in the करूंगा? pastime is not मुझे तो even कथा in your चाहिए eternal महाराज। abode. So, I मैं just need your भक्ति मुहुर pastime and त्वयि katha. रताम त्वयि मैं प्रसंगो, आपके भक्तों के बीच में बैठकर भगवत कथा सुनूं, I should get this यही opportunity चाहिए। to listen to your pastimes सो in ध्रुव महाराज association ने of याचना devotees of की है, your devotees. स्वर्ग So, नहीं Dhruv चाहिए, Maharaj requested, वैकुंठ नहीं I चाहिए, don't जो need देना है the दे दो, heaven or your सत्संग eternal abode. चाहिए, I भक्तों just के need बीच में बैठकर association मुझे of the आपकी devotees कथा and चाहिए। your pastimes. बताइए, मैं कितना भी So tell प्रयास me, करूं शॉर्ट करने no का, matter how much इम्पॉसिबल। I एक एक try अर्थ hard to shorten महत्वपूर्ण, it, कवि भी one ईडितम। every meaning is equally important. सनातन गोस्वामी ने टीका लिखी है, Sanatan Goswami has written मैं ज्यादा नहीं, केवल or जो थोड़ा बहुत interpreted. याद था वही मैं आपसे निवेदन कर रहा So हूँ, let me share और बहुत whatever I थोड़ा है। remember. Although he has कवि written भी so ईडितम much के ऊपर on Kavi सनातन Bhiditam, गोस्वामी लिखते हैं, Sanatan एक Goswami सुनिए, writes, कवि भी बहुत Kavi सुंदर है, Bhi, कवि it भी is very beautiful. सर्व अर्थ सर्व अर्थ प्रापकत्वेन प्राप्तकत्वेन ईडितम ईडितम संस्तुतम। थोड़ा सा samstutam. तात्विक है So लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है। it is a philosophical गोपियों ने कहा point, कवि भी but it is ईडितम, a very हे good point. कृष्ण तव So कथा, the आपकी gopis have कथा said, कवियों Kavi के Bhi द्वारा Iditam, ईडितम संस्तुत की that गई है। it तो has been कवियों ने कृष्ण कथा की संस्तुति कैसे की है? sung तो by सनातन गोस्वामी the टीका great में लिखते personalities. हैं, So कवि भी Sanatan Goswami सर्व writes अर्थ in his interpretation, प्रापकत्वेन, ये बहुत टेक्निकल समझने वाला सब्जेक्ट है it is a very technical subject to कि be कृष्ण understood. आपकी कथा Your, O Krishna, your सर्व pastime, पुरुषार्थ, सभी प्रकार Sarva का अर्थ माने Purusharth. पुरुषार्थ, सभी प्रकार का So पुरुषार्थ प्राप्त all, करने के लिए साधन it is आपकी an कथा है। instrument to attain all धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, मोक्ष चाहिए, the काम चाहिए, fundamental प्रपंचम pillars of चाहिए, तो इन सबको life. प्राप्त करने का So साधन if क्या है? someone requires wealth, आपकी कथा। opulence, ओके, liberation, और फिर क्या कहते or हैं? love, सर्व the only पुरुषार्थ instrument साधन is आपकी your कथा है, pastime. और सर्व पुरुषार्थ प्रापक माने साध्य क्या है वो भी And आपकी कथा what है। is the goal? And the goal is also your आप समझ रहे हैं ना? pastime. तुमने दीवाबत्ती થાય खरा આમ થોડા ઘણા So થઈ do ગયા? you understand? So let me give you an example यज्ञ to होता make it है, मान लो more कुछ लोग clearer. यज्ञ करते हैं, So sometimes people ठीक है, perform yajna or homa, यज्ञ करते हैं, fire तो sacrifice. यज्ञ So when एक we साधन perform है, a yajna, it is an साध्य क्या है? instrument. And what is the उसके लिए goal? साध्य यज्ञ नहीं है, साध्य है The स्वर्ग goal is not या संसार की कोई सुख the संपत्ति, fire sacrifice, दोनों अलग हो but गया ना। heaven or some साधन material हुआ यज्ञ opulence. So और the साध्य instrument माने is गोल the लक्ष्य क्या? fire लक्ष्य है sacrifice, and the संसार goal की or the सुख या fruit is स्वर्ग। some तो material साधन अलग desire है, or गोल अलग heaven. है, So they लेकिन both are कृष्ण different. कथा कैसी है? But the pastimes साधन of the भी Lord कृष्ण is such, कथा है it is और the साध्य भी instrument कृष्ण कथा and है। as well as it's the goal as well. मतलब साधन अवस्था में भी हमें क्या करना है? कृष्ण So कथा, even और when we are कथा सुन सुन performing के हम
we have to listen to the pastimes of the Lord. And when we are purified, what are we going to do? We have to listen to the Katha. So if we have got this human life, what are we supposed to do? We will listen to the pastimes of the Lord. And when we are dead, we will go to the eternal abode of the Lord. What we will do? We'll listen to the we will listen to the pastimes of the Lord. That is what we are supposed to do. तो ये एक अद्भुत साधन है So it is a कि great साधन भी है instrument, और साधन which भी is an instrument and the goal itself as well. और एक अर्थ किया गया कवि भी So there is another meaning or कवि भी का interpretation. एक अर्थ है बुद्धिमान It also जिसको गुरु के refers मुख से to आज हमने सुना wise people. I heard कवि it भी from my बुद्धिमान Guru है Maharaj. तो क्या अर्थ बना गोपिया So कहती है what does तव it कथा means? कवि भी ईडितम इसका अर्थ Tva क्या है katha kavi bhi आपकी iditam. कथा It कवि भी means your pastime बुद्धिमानों के द्वारा by ईडितम सुनी intellectuals. जाती है Iditam is इसका listened अर्थ or है जो heard. बुद्धिमान है So that means वही those who are आपकी कथा intelligent सुनेंगे will जो listen बुद्धिमान to your नहीं है pastimes or वो भी proclivities, टीवी बंद करके सो जाएंगे or others will मतलब just बुद्धिमान shut कितने हैं off एटलीस्ट इतने the लोग तो है system and go to sleep. So these many people are बुद्धिमान लोग wise. आपकी कथा सुनेंगे So only the wise will एक listen to your pastime. It's not that श्रीमद् I am भागवत saying के this. प्रथम स्कंद के दूसरे In the अध्याय first के canto, 22वें श्लोक second में chapter, आप 22nd लोगों के verse, लिए for all of you, आप लोगों के लिए एक दो बाईस आप भागवत जी के पाठ लीजिएगा 1.2.22, सुद you can open गोस्वामी the कहते हैं Bhagavatam and see. Sud ऋषिवर मुनि कहते Goswami हैं says, अतो वे or the कवयो sages भवन्ति say, भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी ये भगवत कथा एक ऐसा साधन है they जो say that साधन काल में this भी सुख देता है pastime of the Lord और is such an शीघ्र फल instrument में that भी सुख it, देता है while we are बाकी doing it, साधनों में ऐसा नहीं are है यज्ञ करने we बैठेंगे तो feel यज्ञ के satisfied फल and मिलते blissful, रहेंगे and उसके फल afterwards आपको also सुख we will देंगे feel लेकिन blissful and साधन में तो satisfied. कष्ट है ना So ध्यान when we करोगे perform a फिर sacrifice or चुपचाप बैठना meditate, है मुंह then बिगाड़ना है it is बाजू वाले से बात भी नहीं difficult करना है or कष्ट painful तो है ध्यान to करने में perform, but ध्यान करने में the तो नानी fruit ही मर is जाती हैं great. बाकी सब When we are साधनों में कितना supposed to कष्ट है be charitable, we लेकिन feel so much distress. ये So भागवत it is कथा painful to का perform श्रवण these जो है साधन अवस्था में भी सुख देता things, है but और सिद्ध this अवस्था में pastimes of भी the सुख Lord देता है इसलिए gives bliss in बुद्धिमान both the व्यक्ति situations while performing it कृष्ण and कथा afterwards as well. इस So साधन a को wise स्वीकार person करते हैं जो साधन accepts अवस्था में this भी सुख और सिद्ध instrument काल में भी सुख because it देता है provides benefit in both the भक्त stages. नैमिषारण्य के ऋषि मुनि So, or devotees रोते in हुए सुखदेव Naimisharanya, को the कहते हैं sages अच्छा हुआ महाराज said आप to Suji while नैमिषारण्य crying में आ that गए it's great that you are बोले here. सुध गोस्वामी अच्छा हुआ आप नैमिषारण्य में आ गए हम 1000 वर्ष तक यज्ञ We करने का संकल्प we've लिए थे we दो had taken the महीने में vow हम थक गए to यज्ञ की इतनी perform a प्रचंड अग्नि fire इतनी sacrifice for हम 1000 years, धुआं but था in था 2 months काले we पड़ गए we ये आप are आ गए tired in अच्छा two हुआ months. यज्ञ का प्रोग्राम We कैंसिल किया भागवत have, कथा because यज्ञ you are का here, we प्रोग्राम have कैंसिल cancelled किया and we have started this program नहीं of तो यज्ञ के listening फल to मिलने से proclivities of the हमको Lord. परेशानी है Otherwise, we were धन्य है distressed आपने by the हमें कृष्ण smoke of कथा the sacrifice. सुनाकर कृतार्थ कर दिया है So please be grateful गर्वाजन to, ऋषि कहते we हैं will be अब grateful, and कलयुग में तो if you speak the कृष्ण Bhagavatam to वर्ण us. तुषार Garda कृपाणा Muni कपटास्त mentions, पार्षदम यज्ञ संकीर्तन कीर्तन माने ये कथा तव कथा Kirtan means यज्ञ Katha, or संकीर्तन listening to the गाए proclivities of the Lord. यजंती ही सुमेधस जो मेधावी है जो So he says, बुद्धिमान है those who are जो ब्रिलियंट intelligent है or वही व्यक्ति brilliant, कृष्ण कथा सुनेगा those only बाकी will सब listen व्यर्थ ही to the मरेगा pastimes of the Lord. Others will just तो waste their कवि भी time. ईडितम माने So, Kavi bhi बुद्धिमानों के iditam द्वारा ये कथा means गाई the गई intelligent sing the glories of the सब Lord गोपियों ने or इसको बड़ा pastimes of the स्वीकृत Lord. किया That is what the तव gopis have requested. कथा
तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे कृष्ण, आपकी He कथा says, O Krishna, your pastime, kalmash apaham. So the next word, tva katha amritam, tva katha tapta jivanam, tav katha kavibhiriditam, tva katha kalmashapaham. This is the next glory that gopis are singing. आपकी कथा Your pastime, मनुष्य के सारे कलमश को अपहम माने it नष्ट कर देती है। eradicates or destroys all the kalmasha of humans. So there are so many meanings of kalmash. One meaning is sin. आपकी कथा So your pastime मनुष्य के removes, के absolves सारे कलमश all the sins सारे of पाप को a living नष्ट कर entity. देती है। शिवा श्रीधर स्वामी ने एक बहुत Sripad Sridhar Goswami has given a great philosophical point. का अर्थ He says, what is the meaning of kalmasha apaham? काम कर्म निरसनम He भगवत says, अमृत kam, अनेकों प्रकार ras, के काम nim. So और all types of शुभ desire, कर्म का pious and bad निरसन evil करने वाला deeds, है। nirasan. अर्थात कथा सुनने That से means by listening to the pastimes of the जो Lord, कामनाएं हैं वो धीरे all the धीरे desires तुच्छ हो जाती हैं, became शुभ अशुभ कर्म धीरे negligible, धीरे all the निरसन हो जाते हैं। good and bad deeds become कैसे? negligible. How? भगवत कथा सुनने से By listening to ये the काम pastimes of और the Lord, कर्म कैसे these नष्ट desires होता है? and deeds are destroyed. How? वर्तमान में हम लोग In present, we all भक्ति मार्ग को स्वीकार तो किए हैं, have accepted the path of लेकिन devotional क्योंकि हम service, लोग शुद्ध but भक्त नहीं है, because we are not yet इसलिए purified, हमें therefore हमारे कर्मों का फल भी भोगतना पड़ता है। we हम suffer सब from our past deeds or karma. नहीं अनुभव नहीं करते हैं। So have not हमने we कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा faced नहीं it? सोचा, We haven't done लेकिन anything फिर wrong भी for others, हमारे yet साथ बुरा होता है। we are कोई हमें treated कुछ बुरा badly. कह देता है, Someone says हमने something कभी bad for किसी को us. किया नहीं, करा We नहीं। haven't criticized anyone. चलो इस जन्म में नहीं किया, But पूर्व in जन्म this में world, किसी का बुरा life, किया, we won't have done it. वो जो But maybe कर्म in है previous life, फल we might have done भुगतना it. पड़ता है। So that इसे is what कहते हैं we are कर्म suffering. बंधनम। That is called the bondage of our ये भगवत कथा जो past है ना, deeds. So this कामना proclivity of the बंधन Lord से मुक्त करती है और relieves कर्म us को from the बंधन से मुक्त desire करती है। कलमश and अपहम, from the गोपिया कहती है bondage ना, of our कलमश deeds. अपहम माने नाश करती है। So Kalmash तो श्रीधर Apaham स्वामी means कहते it हैं कलमश destroys. का अर्थ Sridhar है Goswami काम says और कर्म। Kalmash means desire, that कामना is हमारी calm, and कामनाओं को खत्म कर देती है karma, that is और our हमारे deeds. बुरे कर्म को खत्म कर देती So है। it destroys our bad deeds and our desires. और इस बात को भगवत गीता And में in this, कृष्ण ने बहुत सुंदर and तरीके से this वर्णन is किया। told in Bhagavad Gita by Lord गीता Shri के Krishna फर्स्ट very चैप्टर beautifully. 37 नंबर के In the श्लोक में कृष्ण 4.37, बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स के Krishna साथ, gives a ये गीता beautiful भी बहुत example. सुनने लायक है। जैसे ये भागवत सुनते हैं ना, So तो we कई बार should गीता की
listen to Bhagavad Gita also, अब देखो ये क्या like बोलता Bhagavatam. 4.37 नंबर का So श्लोक this is 4.37 कृष्ण कहते verse यथे from Bhagavad धांसी Gita. Krishna says, समिद अग्नि यथा जिस प्रकार Yathe dhansi एधांसी एधांसी माने ईंधन idhamsi जिस प्रकार से ईंधन means fuel. समिद्व अग्नि So प्रज्वलित in अग्नि the manner the fuel, उसमें जो भी डालते हैं वो सब samidho agni, भस्मसात कुरुते हे अर्जुन whatever we put in that fire जैसे is प्रज्वलित destroyed. अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है So पहली दो लाइन में like कहते the हैं fire burns कोई आग है everything आग that is उसमें आप combustible. गैस डालो पेट्रोल डीजल डालो वो आग उसको So छोड़ेगी if you put जितना डाला है तुरंत उसे भस्मसात a कुरुते petrol उसको टोटल भस्म कर देगी in तो the आप क्या fire, कर then रहे it हैं will be तुरंत एक completely बार destroyed. अग्नि में आपने You आग need not डाल to दिया stand there. Once you अग्नि में have आपने put a ईंधन डाल दिया combustible तो उसे material भस्म कर in the देती है fire, then it जैसे will destroy it. किसी अग्नि में पेट्रोल As डालने से वो पूरा पेट्रोल भस्मसात if कुरुते we put भस्म कर petrol देती है अग्नि in the fire, it will be destroyed. ठीक उसी प्रकार It will be destroyed by the ये fire. ज्ञान जो है Similarly, अग्नि के समान है this knowledge हम्म? is like the ज्ञान अग्नि fire, के समान है और हमारे कर्म and ईंधन के समान है our past deeds तो are ज्ञानाग्नि combustible इसी लाइन में material. ज्ञानाग्नि सर्व So in the कर्माणि third line, you see Gyan भस्मसात Agni Sarva कुरुते Karmani यथा Vasmatat Kurute Tatha. ज्ञान रूपी अग्नि में So हमारे in सारे this कर्म भस्म हो जाते हैं knowledge of fire, all our past जैसे अग्नि deeds से are ईंधन destroyed. भस्म हो जाता है As the वैसे ज्ञान combustible रूपी material अग्नि is में destroyed सारे in the कर्म fire, भस्म हो जाते हैं similarly, all the past तो deeds जब हम कृष्ण कथा are सुनते हैं destroyed तो कृष्ण कथा में from एक this पाठ knowledge. एक So when we listen to the सब्जेक्ट एक proclivities of the पाठ Lord, there is a subject in that कृष्ण is the कथा के knowledge अंतर्गत or Gyan. भक्ति है ज्ञान है So वैराग्य है ओके in सो Krishna कृष्ण कथा Katha, we में एक get हिस्सा है detachment, ज्ञान we get वो knowledge, ज्ञान जो etc. है And हमारे that बुरे knowledge कर्म को भस्मसात कुरुते burns all our बुरे कर्मों को past भस्म करती evil है deeds. मतलब जो बुरे कर्म है या So तो all हम the भोगत के evil पीछे deeds, खत्म करें जो either we need कठिन to है suffer for या them, which is कृष्ण very कथा tough, सुनकर or by बुरे listening कर्मों to को the भस्म कर pastimes of the दें Lord, we can get them destroyed. मुंडक उपनिषद आपने सुना होगा In Mundak Upanishad, you मुंडक might have उपनिषद में heard एक श्लोक है और the name. ऐसा ही There श्लोक is a श्रीमद् verse भागवत जी में है आप which ऊपर is देख also सकते in हैं Srimad Bhagavatam. You can उसमें see this लिखा है verse. It is said, विद्यते हृदय ग्रंथि Vidyate Hriday ये Granthi. कथा कलमश अपहम के That's ऊपर कहा जाता है pastime. We are speaking कलमश or को talking नष्ट कर about देती है Kalmasha तव Apaham, कथा कृष्ण कथा कैसे that तो your मुंडक pastime उपनिषद और भागवत destroys दोनों में ये श्लोक है भागवत Kalmasha. 1:2:21 और So मुंडक it's उपनिषद in Bhagavatam 2:8 में ये कहा गया 2.2.21. And in Mundak Upanishad क्या also कहता it है is mentioned. What विद्यते is said? हृदय ग्रंथि कृष्ण कथा Vidyate Hriday हृदय Granthi. ग्रंथि को तोड़ देती है हृदय ग्रंथि जानते हैं ना Do you know what is Hriday हृदय में Granthi? गांठ होती है So there is a knot सुबह in our उठते हैं heart. पतंग उड़ाते हैं Have शाम को you सोते ever हैं flown the नहीं kite? अच्छा माताएं बाल धोती हैं तो गांठ हो जाती है So the mothers, when they बस तुम्हें दांत क्या लेना आज क्या wash करूं their hair, ऐसे they आंच क्या get knots. मारती है आज क्या And करूं then घूंसो they निकलती है ग्रंथि नहीं निकलती try to तो unknot them. विद्यते हृदय ग्रंथि उसी प्रकार हमारे हृदय में गांठ Similarly, पड़ गई है in our heart, there is a knot मोह माया ममता रूपी गांठ that is of ये our सारी ग्रंथि जो detachment, है greed, भगवत कथा से तोड़ी etc. जाती है And it can be छिदन्ते सर्व broken संशयम only by listening to the pastimes of the कृष्ण Lord. कथा के द्वारा हमारे सारे संशय मिट जाते हैं By listening to the pastimes of क्षीयन्ते the च Lord, all our संशयमानि confusion कृष्ण is कथा absolved सुनकर or removed. हमारे सारे By कर्माणि listening to the proclivities कर्म of the Lord, क्षीयन्ते क्षय हो जाते हैं Karmani, all दृष्ट our deeds एवात्मनीश्वरम become कथा सुनकर impotent अपने हृदय में परमात्मा का or दर्शन futile. करने से And by ये सब seeing the कुछ Lord, भस्म हो जाता है everything इसलिए is destroyed. तव कथा All these things are destroyed कलमश अपहम by listening to the इसलिए pastimes of the Lord. आपकी कथा
So, oh Lord, your pastimes destroy all the कथा सुनने से क्या होता है? kalmasha, जैसे that is शुरुआत में कथा distress. स्वामी ने कहा, So, Sripad कल्मष Goswami शब्दम, says, कल्मष का अर्थ है कामना और बुरे कर्म। he says, कथा Kamana, सुनेंगे that is तो desire, and कामना our नष्ट हो evil deeds, जाएगी और both जो will be बुरे कर्म destroyed. है, कर्म बंधन, वो भी खत्म हो जाएंगे। So, both तो यहाँ will पर be एक आचार्य destroyed ने प्रश्न if we उठाया, listen to the pastimes of the कथा Lord. So, one एक Acharya raised एक्टिविटी a है, question. कथा सुनना एक ही एक्टिविटी है ना? He said that कथा listening to सुनना the केवल एक pastimes ही of the Lord एक्टिविटी is है। one activity. एक एक्टिविटी करने So, से one दो दो काम कैसे activity, होते हैं? how can it give benefit केवल of two? कथा सुनने से So, by just listening to कामना the भी pastime खत्म of the होती Lord, है एट ए your टाइम, desires बुरे कर्म भी खत्म हो जाते and हैं evil deed both are एक ही destroyed व्यक्ति से दो दो काम simultaneously. कैसे होते हैं? How is it possible? तब इसका उत्तर नव Then योगेश्वर मुनि देते हैं। Nav Yogeshwar ये Muni हम reply, कल की कथा में श्रवण we will करेंगे। listen to this tomorrow. अब બધું તમને એક સાથે જોઈતું એમ થોડી ચાલે, થોડા I ધીરે cannot ધીરે tell કરવાનું everything है। in one. से वैसे भी समय हो चुका है। Anyways, the मैं कोई time is रोप की up. तरह कोई खींच नहीं रहा हूँ, आप देख रहे I'm हैं? not stretching anything. कथा के पॉइंट मतलब श्लोक My के शब्द से see, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं जा रहा हूँ। I'm just केवल मैं focusing on the शब्द को words देख of this सकता हूँ, मैं verse. कोई आगे We're पीछे की बात focusing नहीं। on the फिर word. भी आप देख सकते हैं Yet, कि if you कितनी सुंदर can सुंदर see व्याख्या और how much शब्दों beautiful की संख्या interpretations are there ये to की गई है। understand सो these आप सब verses. लोग इसे इस So, थ्योरी को समझ रहे हैं। you all are मैं तो इसी में trying खुश to हूँ listen to the कि theory. अब So, I'm आपको ये satisfied in समझ that. में आ रही है कथा को That एक्चुअल कैसे सुननी चाहिए। that how you should listen to प्रत्येक the श्लोक के Bhagavatam. अर्थ को, शब्द को Every संपादन करते हुए, word of the उन्हें अन्य verse वेद should be शास्त्रों से relished कनेक्ट करते हुए, and समझते connected हुए, with other इस प्रकार से scriptures अगर and कथा understand. सुनेगा And when तो we listen भागवत in this सुनने में manner, 100 साल then भी कम पड़ जाएगा। even 100 years 100 will be साल भी less कम to पड़ listen जाएगा to आप ऐसे Srimad कथा Bhagavatam सुनोगे तो। if you listen the पर इसे Bhagavatam ही like this. सुनना चाहिए। But we should listen in this यदि manner. सुनाने वाला कोई हो, If you मुझे तो have इतना a नहीं rater, आता है, although मैं I तो कोई don't know ज्ञानी that विद्वान much, पंडित नहीं, but आदमी if तो मूर्ख because हैं। I'm not a अपने wise, गुरुदेव से learned सुनना scholar, है। I'm a अब fool. जितना सुनते But हैं whatever उतना I've याद heard नहीं रहता, from the Guru Maharaj, जितना but याद रहा we उतना can't बोल भी नहीं remember पाते हैं। whatever तो जो he भी spoke, आपको and कृपा से whatever we मुझे have चिंतन remembered, मंथन होता है, also we cannot आपके speak बीच में चर्चा everything. करते हैं, So आप लोग whatever I समय could, निकाल कर I इसे सुन रहे try हैं, to share it with all of you. इसकी You महिमा all are भागवत taking होती है। time सो to मैं आप listen सब to this, लोगों so को you पुनः all are धन्यवाद glorious. करता हूँ। So I'm really thankful to विशेष all of धन्यवाद you. करता हूँ I'm इस कथा का specially thankful to आयोजन करने the वाले organizers of भावना this माता beautiful जी Katha, और Bhavna रसिक Mataji प्रभु, and Rasik और इन्होंने Prabhu, जो मैसेज दिया मुझे and मुझे the शांति, message मुझे that they मिली, shared. मुझे अच्छा लगा It has कि इसको satisfied धैर्य me से सुनना है। that we नहीं want तो to listen it patiently. पुड़िया भी बांध सकते हैं, Otherwise, we can एक shorten it as well. बोलकर खत्म भी कर सकते हैं। We कथा का can अर्थ conclude भी हो short. सकता है, समाज भी So हो we सकता can है, लेकिन अभी elaborate रास्ता as well आगे चल as रहा है, conclude in short. But तो हम सब लोग right इसी now, को we are गहरा से in the सुनना mode of तो expansion खुश or होंगे। elaborating आप it लोग इसे further. स्वीकार कर रहे हैं, And you आप all सबका are धन्यवाद। accepting that. So कल I'm से really अपना thankful काम to पर all of लगे हैं, you. So प्रयास tomorrow is the करेंगे last day. So we कि will कल try इसे हम कंप्लीट करें, to देखते हैं complete क्या at होता least है, this verse, but let's तो see ईश्वर what के will हाथों happen में है। tomorrow. और It's यदि all आप in लोग the मेरे hands of the संकल्प Lord. को If केवल all you आंखों have के the सामने नहीं देखेंगे, we will not लोगों look के सामने देखेंगे, on the clock, जब we will तक just just look समाप्त न at हो the verse हम लोग till the चलते point रहेंगे। it is ओके, concluded. सो We will थैंक यू, keep on धन्यवाद। आइए speaking and जय listening. जयकार So करते let's हुए conclude हम आज के the सत्र को session, विराम करें। today's session. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान